Shivakumar from Bengaluru. Presently I live in Poland. IGNOU University, it's one of the best universities in India. It's a pride of India. Some people are very much proud to say that they have been graduated from Stanford University, Cambridge University and Harvard University. So I am proud to say I have been graduated from IGNOU University, India. I observed that IGNOU staff, IGNOU team, they are really very cooperative. Administration wise and library wise, examination wise, study material wise, contact program wise, they are absolutely excellent. Alumni meeting for the pass out students of IGNOU was in fact a unique initiative which was organized by the campus placement cell and the regional services division. From August 2021 we had planned for interaction with our distinguished alumni across 56 regional centers of the university. Hi, I'm Isha Dugan, IS 2014 batch, and I'm posted as VC in Varanasi Development Authority. I pursued PG Diploma course in Rural Development from IGNOU, RC Varanasi, and found it extremely beneficial for the kind of service that I'm in. IGNOU is a highly professional knowledge platform offering seamless quality education at your doorstep. It reaches the unreached, is learner-centric and hassle-free, an excellent medium to upgrade your skills. Affordable and accessible quality education. I share with you the joy and happiness of receiving a degree from our university, as I was also a recipient of a IGNOU degree. I was fortunate to have the opportunity to be enrolled among the first batch of MEd students. My MEd degree from IGNOU gave me the opportunity to appear for NET, and I could clear NET at my first attempt. This very degree made me eligible to apply for a teaching position at the Central University in Mizoram, where I am currently working. I thank all the officials of IGNOU for providing the opportunity for further studies, giving hope for a brighter future to millions of students all over the world. Our university is the world's largest university in terms of the student strength. We are more than 35 lakhs in number. We are 37 years old, and the passed out students from this prestigious university are 39 lakhs. They are our alumni. They are our sources of strength. They are our brand ambassadors. And if we add the number of our present IGNOU family strength with the family of our alumni, the number goes up to around 74 lakhs. Maybe this number, it is much more than many of the countries in the world. Similarly, if you count that each learner is having 3 to 4 family members, then this number further grows up to more than 3 crores. As a first step, we have registered Alumni Association of IGNOU as a registered society, and all the alumni of the university are members of that association. The other thing that we did to revive our connect with our alumni was to create an alumni portal. We also
created a separate exclusive Facebook page for our alumni, which provides a platform to our alumni across the world to share their ideas, share their thoughts, exchange views with each other, and in the process inspire the current learners of the university. I have done my Bachelor of Science in Zoology that gave me a deep insight in physiology of animals and human beings. I got myself enrolled at the age of 43 in MSc DFSM in Delhi. I thank IGNOU for handholding me and giving me this wonderful platform for engaging in a job of my own liking. I am an alumni of IGNOU. I have completed my MBA in Operations Research in 2013 from IGNOU University, and I am very thankful to the IGNOU University as well, the regional centers, support staff and all the staff members, as well Director of Regional Center IGNOU Shimla for helping me to complete my course in a very successful manner. And I wish all the students who are pursuing degree and diploma courses from IGNOU University for their grand success in the future. The Alumni Association seeks to engage with the alumni of the university and provide a platform for interaction with the existing students, and these it is envisaged that the various kinds of interactive platforms we can provide is through organizing lectures, webinars, seminars, both at the central level at the headquarters and also at the regional center levels. Another major objective is to recognize the efforts, the contribution of the alumni to society, and also to open chapters, like we have 56 regional centers across the country, to open a chapter in each of these regional centers to facilitate greater interaction between the learners and the alumni of the university. My name is R.S. Lorin Puya, residing in Mizoram, a totally blind person. I have a Bachelor of Education, B.Ed degree, with the first class, work as a lecturer at the ISOL till date. The degree I have pursued from IGNOU has strongly driven me to pursue higher education. That leads me to engage myself for the MBA program in 2020. I am deeply honored and thankful for being one of the candidates at IGNOU, and wish my best regards to IGNOU for its future endeavor. I am very happy and proud to be associated with IGNOU. In 2003, I received a gold medal in postgraduate diploma in journalism and mass communication. It was an inexplicable phenomenon in itself. I am glad that my efforts were acknowledged. It was the time when my children were in board classes, class 10 and class 12, and along with them, their mother was also writing her exams. I am really glad and grateful to IGNOU because this university gives me more opportunity to prove myself. Because and now I'm totally satisfied. I did 3 courses from IGNOU, and after that I would learn to Persian language in 2023 after my course will end. After that I will do my Persian course from IGNOU. I just say to all the people and all the learners that you have chance to continue your education after 12th class, including you can do job in as well as your studies. Just believe yourself and do whatever you want and do your studies continue. This is the team. This inspires us. This motivates us. This gives us strength to work hard. And that core strength is the IGNOU's brand value. That is our prime source of motivation, and we all are working together to make this university the world's largest, having access to almost all corners of the globe,
with thrust on equity, quality and affordability. Hello everyone, I am Tamashini Burwa, presently working as a lecturer in District Institute of Education and Training, that's Sagar Sonari. I did my B.Ed in 2014-15 from IGNOU and passed out with flying colors. This IGNOU had helped me in enhancing my career and to clear the prestigious APSC examination. So I wish everyone and hope that if you will pursue courses from IGNOU, it will definitely help you in enhancing your career. IGNOU's alumni carry significance in the sense that they are not similar to the alumni of regular or conventional universities. We have alumni of different age groups. We have people who are holding very high distinguished positions in the society, and they come from diverse walks of life. I am really proud of to say that I was a student of IGNOU, which NAC has accredited A++. IGNOU administration is very good, systematic. Study material which I have received are very good. I got a privilege to keep a good contact with students and academic counselors of different parts of India. Myself is Ram Singh Gujar, RAS officer, that is Rajasthan Administrative Service Officer. Presently I am undergoing training in OTS, that is Officers Training School, Jaipur, as training SDM. And I also have been in Indian Navy for 8 years. मेरी जर्नी के बारे में बात करूँ तो I had really a wonderful journey with IGNOU, और इसमें जो 2-3 चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा. The first thing, the flexibility. The kind of flexibility IGNOU provides, it has been a blessing for the all defense personnel. IGNOU के notes के जो contents हैं वो इतने अच्छे हैं कि even while preparing for UPSC मैं उसको रेफर करता था. स्पेशली पॉलिटिकल साइंस के जो वेस्टर्न थिंकर्स वाला पार्ट है और जो फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है, दैट हैज़ बीन रियली वेरी गुड. तो जब मैं अपनी बात करता हूँ तो मैं वॉट एवर आई हैव बीन टुडे, तो इसके लिए मैं IGNOU का बहुत योगदान मानता हूँ. और आई वुड रियली लाइक टू रेंडर माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड to all the faculty members and each and every member of the IGNOU. The reason I chose IGNOU was because it gave me this liberty to continue or rather pursue my academic interest while I could simultaneously work at the field level and gain that field level experience. And so this is my message for everyone who is planning to pursue whichever discipline in the mode of distance learning. IGNOU is one of the best available universities in India that offer you almost all the programs in all the disciplines in the distance learning mode. And I am also happy to share that basis my qualification from the university along with the field experience, I have been offered to work in the UK in the field of child protection and safeguarding. While working as a joint director and coordinator at SCRT Mizoram, I am now currently holding the post of State Commissioner for Persons with Disabilities, PWD, Government of Mizoram. My degree in MEd helped me immensely in my day-to-day activities to a great extent. My dissertation entitled A Study of Blind Students in Mizoram was published in the year 2020. My accomplishment from IGNOU has provided me a strong assistance in my pursuit for understanding and helping persons with disabilities in my day-to-day work. There are unending stories, and it was a very, very inspiring experience. We have uploaded their experiences, their videos on our Facebook page, and our current learners are watching them with keen interest. We hope that in the days to come, this Alumni Connect, our efforts, not only from the headquarters but through the regional centers, will become a movement. And in days to come, our alumni play a significant role in further development of the university. The kind of experience sharing that was there in the platform for 3 hours by the
alumni, along with the Honorable Vice Chancellor of the University, the Director Regional Services Division, the Director Campus Placement Cell, was something very, very unique. And therefore we thought that we will record these interactions for the next generation. Welcome to the 35th convocation of the Indira Gandhi National Open University. On this occasion, Shri Dharmendra Pradhan, Honorable Minister of Education, Government of India, will deliver the convocation address. In this convocation, more than 291,000 learners will receive degrees, diplomas and certificates, and 17 learners will be receiving MPhil degrees and 75 learners PhD degrees. This occasion will also celebrate the academic achievement of IGNOU learners through the award of gold medals and special prizes such as Professor G. Ram Reddy Memorial Gold Medal and Dr. APJ Abdul Kalam Award and other awards. IGNOU, as it is popularly known today, was established by an Act of Parliament in 1985 as a National Open University. In the year 1987, the university began by offering two academic programs, Diploma in Management and Diploma in Distance Education, with a strength of 4,528 learners. In the last 36 years, IGNOU, through high-quality self-learning material, established itself as a national resource center. Today, with a cumulative strength of more than 39,70,833 learners, IGNOU has become the leader in open and distant learning. IGNOU, through its 21 schools, is offering 281 academic, professional and technical programs. It serves the educational aspirations of learners all over the globe through a network of 56 regional centers and 11 recognized regional centers of Army, Navy and Assam Rifles. In one of the foundation stone laying ceremony for a regional center, Honorable Minister of Education lauded the efforts of IGNOU. I am proud that IGNOU is playing an instrumental role in taking higher education to the masses with these regional centers. I congratulate you on achieving this milestone. Friends, as you all know that a regional center is the first place of contact with students in the far to reach areas. The regional center contributes significantly in disseminating quality education and helps bring more people into the fold of education. In the occasion of 36th Foundation Day lecture of IGNOU, Honorable Minister of State for Education, Government of India, Dr. Subhash Sarkar lauded the efforts of IGNOU. In the last 36 years of its existence, IGNOU has achieved many milestones, having its mandate for flexibility, accessibility, equity, quality and affordability, which is now told in our national education policy. IGNOU has started long before. For the benefit of learners, IGNOU has about 58,291 academic counselors who are always ready to act as academic mentors and give the much needed human interaction to the learners. In addition to offering programs through ODL mode, the university is successfully offering a number of online programs. Here you can see a housewife, an engineer, an old age person, a working professional learning on the same platform. Over the years,
IGNOU has lived up to the country's expectations of providing education to the marginalized sections of society. We are also trying to reach socially disadvantaged groups like scheduled castes and the scheduled tribe population who are having their income level much below the specified limits. And the fee waiver scheme, it is very, very peculiar. We are extending it to BA, BCom and a few selected certificate and diploma programs along with BSc. The university has study centers at different jails across the country, with many jail inmates benefiting from this initiative. University has strengthened its existing infrastructure to meet the growing needs of learners by adopting modern educational technology. In the very crucial and challenging time of COVID-19 pandemic, IGNOU has served its learners uninterruptedly through its FM radio channel Gyan Vani, web radio Gyan Dhara and television channel Gyan Darshan. During the lockdown period, when the entire country's educational institutions were closed, IGNOU served its learners and general masses through more than 698 interactive radio sessions and 715 live teleconference sessions, and provided educational support and other learner support services. In order to enhance or penetrate our reach to the learners, we have also initiated the process to translate our materials into the regional languages. Additionally, IGNOU has started conducting live classes in 13 regional languages through Swayam Prabha channels. IGNOU also serves its learners through digital platforms such as IGNOU e-Content app and e-Gyan Kosh. Not only this, it also makes use of different social media platforms such as YouTube, Twitter and Instagram. IGNOU's enrollment is increasing year by year, and in the last admission cycle, it reached to more than 13,11,000 learners. At the juncture when government is creating avenues for enhancing gross enrollment ratio, IGNOU can play an important role. Not only can play, IGNOU is doing it. I should appreciate for that. IGNOU's academic programs are well received by the industry and the professional world. IGNOU conducts special recruitment drives through its campus placement cell CPC so as to facilitate the process of gainful employment for its divergent and heterogeneous learner population. Our undergraduate programs, now they have become more focused for the skills, more focused for the core courses, more focused for the discipline-based specific elective courses. This judicious blend of these courses makes a learner employable, and when they go to join an industry, when they want to work as an entrepreneur, they are becoming more and more successful. IGNOU is ranked first under the category CFI's Non-Technical in Atal Ranking of Institutions on Innovation Achievement 2021, a flagship program of the Ministry of Education, Government of India. University has designed and developed an innovative scheme, IGNOU Udyami, for recognizing and supporting the budding entrepreneur students as an initiative towards Atmanirbhar Bharat mission of the Government of India. I am sure that in tune with NEP 2020, IGNOU will implement the policy futuristic recommendations and provide quality education to lifelong learners. We would like to assure the prospective learners that IGNOU, as one of the mega university of the world, has the capacity, capability, infrastructure and resources to transform your educational experience into a lifelong learning experience.
तब मुझे ये परेशानी शुरू हुई। उसमें मेरा पूरा शरीर धनुष के आकार का होने लगा। सभी काम मेरा सारा स्टाफ करके देते हैं वो खुद से, मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होती। 2013 से लेकर के 2022 तक का एक बहुत ही अच्छा अनुभव रहा इग्नू के लेकर के, खासतौर से इग्नू के स्टडी मटेरियल को लेकर के। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे शायद इग्नू से बहुत पहले से जुड़ जाना चाहिए था। पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छा अनुभव मेरा यहाँ पे रहा और बहुत सी चीज़ें इग्नू से मुझे सीखने को मिली। और जिस तरह का स्टडी मटेरियल यहाँ मिलता है, मैं समझता हूँ इतना बेहतर स्टडी मटेरियल जिससे आप गहन अध्ययन कर सकें और उस विषय के वाकई में मास्टर बन सकें। एक जो सबसे बड़ी इसकी बात है वो ये है कि इसमें वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं। मैं इग्नू का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये एक प्रोफेशनल कोर्सेज को बढ़ावा दे रही है। आपको स्टडी मटेरियल घर बैठे प्रोवाइड किया जाता है और स्टडी सेंटर एंड रीजनल सेंटर दोनों से मुझे बहुत सपोर्ट एंड गाइडेंस मिली है। तो जो मैं अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से रख पाता था, क्योंकि इग्नू के सोशियोलॉजी से मेरा सामाजिक ज्ञान बहुत बढ़ गया था। हम सब ये जानते हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय में एल्यूमनाई की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वे अपने अनुभवों के आधार पर विश्वविद्यालय के विकास में बहुत अच्छा फीडबैक दे सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं। और इग्नू जैसा विश्वविद्यालय जहाँ की एल्यूमनाई की संख्या हजारों में नहीं लाखों में है, बल्कि 30 लाख से अधिक है, वहाँ उनकी भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मूलभूत उद्देश्य इग्नू एलुमनाई एसोसिएशन का ये है कि वो हमारे जो पूर्व छात्र हैं जिनकी संख्या करीब 34 लाख है, उनका संपर्क और संबंध इग्नू के वर्तमान के छात्रों के साथ स्थापित कर सकें। और इसके लिए ये एसोसिएशन अपना उद्देश्य लेकर चलती है कि वो विभिन्न प्लेटफॉर्म्स दे, विभिन्न मंच दे इन एलुमनाई को कि वो अपने विद्यार्थियों, हमारे एग्जिस्टिंग विद्यार्थियों को जो रोजगार के अवसर हैं, जो विभिन्न प्रकार के नवोन्मेष हैं, उनके लिए अवसर प्रदान करे और ये एक अंतरक्रियात्मक रूप में इसका विस्तार और विकास हो। और ये जो विभिन्न जो हम मंच इनको दे सकते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की गोष्ठियां हो गई, वेबिनार हो गए, ऑनलाइन मोड से उनके साथ जुड़ना, जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर आदि, उनके माध्यम से एलुमनाई का संबंध और संपर्क और अंतरक्रियात्मक रूप से वे हमारे विद्यार्थियों के साथ जुड़ें और इग्नू की छवि को देश विदेश में इसका प्रचार प्रसार करें और उसे और उजागर करें। विश्वविद्यालय के मूल्यों को विद्यार्थी आत्मसात कर सकें, इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करें। एलुमनाई मीट की इग्नू का अभिनव प्रयास है, जिसको कि हमने पिछले साल 2021 में अगस्त में शुरू किया था। और प्रयास ये था कि हमारे जो 56 क्षेत्रीय केंद्र हैं भारतवर्ष में, और उसमें हमारे जितने सारे एलुमनाइज हैं उनके साथ जुड़ने का एक प्रयास। जब मेरी अवस्था 6 महीने की हुई तब मुझे ये परेशानी शुरू हुई। उसमें मेरा पूरा शरीर धनुष के आकार का होने लगा। BHU में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में मुझे रेफर किया, तो फिर न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ने इतना तो पता कर लिया कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उस समय मेरी हालत ये थी सर, मैं आपको बता रही हूँ, मैं बैठ भी नहीं पाती थी और मेरे मुंह से हमेशा लाट टपकती थी और मैं 3.5 साल तक सोई नहीं हूँ सर। तो मुझे किरण सोसाइटी के बारे में पता चला, फिर मैंने यहाँ पे अपना अध्ययन शुरू किया 6 साल की उम्र से। उसके बाद मेरे माता पिता का स्वर्गवास होने की वजह से मुझे मानसिक आघात पहुंचा था, तो मैंने कुछ साल पढ़ाई ड्रॉप कर दी थी और फिर अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपना MSW कंप्लीट करूँ। इग्नू का स्टडी मटेरियल मैं बताऊँ सर आपको, बहुत ही उम्दा तरीके का है और सर इसकी स्पेशल बात ये है कि ऐसा स्टडी मटेरियल मैंने पहले कहीं नहीं पढ़ा। मैं आगे
विकलांगता के क्षेत्र में ही कार्य करना चाहूंगी। बिल्कुल। और मेरी इच्छा तो है समाज कार्य में पीएचडी करने की, अब देखते हैं। मेरी आज तक की शैक्षणिक यात्रा में इग्नू का महती योगदान रहा है। साइकोलॉजी में एमए कर पाने की जो इच्छा मुझ में थी, उसको पूरा मैं इग्नू के माध्यम से ही कर पाया। इग्नू फैकल्टी द्वारा तैयार पठन सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तर की है तथा यूनिवर्सिटी द्वारा प्रवेशित छात्रों की जिस तरह से हैंड होल्डिंग की जाती है, उसकी और कोई दूसरी मिसाल नहीं है। मैं एक दिव्यांग छात्रा हूँ, व्हीलचेयर का प्रयोग करती हूँ। 2016 में ही मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में इग्नू में एडमिशन लिया, जिसे मैंने 2018 में पूरा किया। 2020 में मैंने एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम पास किया है और वर्तमान में मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। जब शुरू करेंगे, अब हो गया क्या? आइए अब शुरू होगा, जैसे हमारी शक्ल दिखेगी ना। वो दीजिएगा। नमस्कार, आदर, अभिनंदन, आभार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में मैं डॉक्टर आशीष कुमार और डॉक्टर अनुप्रिया पांडेय आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार, I am Anupriya and I join my friend Dr. Ashish to welcome you all, especially you dear students, to the 35th Convocation of Indira Gandhi National Open University, the world's largest open university. Students, please accept my heartiest congratulations for achieving this wonderful success. We acknowledge your hard work and we also congratulate you with the deep core of our hearts. We extend the heartfelt congratulations to each and every member of the IGNOU family at the regional centers as well as at the headquarters, without whose unstinting hard work and dedication this auspicious day in the lives of the students would have been harder to come by. आज के इस दीक्षांत समारोह में विविध परीक्षाओं में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को डिग्री, डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि महोदय, इग्नू के आदरणीय कुलपति महोदय, समकुलपति, प्रबंध बोर्ड के सदस्य, शैक्षिक परिषद, योजना बोर्ड के सदस्य, अध्ययन विद्यापीठों के निदेशक, कुल सचिव और जिन छात्रों को आज उपाधियां दी जाएंगी, वे सभी आज सभागार में उपस्थित होंगे। भारत सरकार में शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। आज ही इग्नू के क्षेत्रीय केंद्रों पर भी दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है। It is truly wonderful to see you all here. The Convocation Day is, after all, much awaited in every student's life, as it gives the returns to the efforts put in by them throughout their academic endeavors. It gives a sense of achievement and a sense of responsibility towards fulfilling further commitments. This is an exciting time. It marks both an ending and a beginning. It is a warm memories of the past and big dreams of the future. Thus, we give our best to make it memorable and exciting for you guys out there. The chief guest today is the most befitting personality for the occasion, the Ujjwala man, Minister of Education and Minister of Skill Development and Entrepreneurship, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में हुई थी। जिन उद्देश्यों को लेकर इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, उनमें संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित अलग अलग माध्यमों के द्वारा शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करना, व्यापक संख्या में नागरिकों को उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराना, सामान्य रूप से समाज के शैक्षिक कल्याण को बढ़ावा देना और देश के शैक्षिक प्रतिरूप में मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहन देना रहा है। इग्नू की लंबी यात्रा पर दृष्टिपात करें तो विश्वविद्यालय ने वर्ष 1987 में बहुत कम छात्रों के साथ प्रबंध में डिप्लोमा,
और दूरस्थ शिक्षा में डिप्लोमा नामक 2 कार्यक्रमों का आरंभ किया था। उस समय इसके विद्यार्थियों की संख्या 4,528 थी और आज शिक्षार्थियों का कुल नामांकन 39 लाख से अधिक है। We once again salute and celebrate the achievements of our students who are being conferred with the degrees and diplomas. Before we proceed further, let me briefly give you some information about what is to follow in this convocation today. The convocation address is to be delivered by our esteemed chief guest, Honorable Minister of Education, Shri Dharmendra Pradhan ji, who is also Minister of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India. Today in 35th convocation, a total of 291,588 learners will be awarded degrees and diplomas, out of which PhD and MPhil scholars are 75 and 17 respectively. Since this occasion is very auspicious and solemn one, may I request all of you seated over here to remain seated until this program is over and to treat this occasion with the solemnity and grace that it deserves. The proceedings of the convocation will begin as soon as the academic procession enters this hall. The academic procession will enter this hall in a short while from now, led by our registrar. The registrar will be followed in double file by the directors of schools of studies, members of planning board, members of academic council, members of board of management, the pro-vice chancellors and the vice chancellor, paired with the chief guest in that order. You all shall be requested to stand up as soon as the procession enters the hall and keep standing until each and every member of the procession is seated, and follow the same when the procession returns after the convocation concludes. All the students seated here will be invited for group photograph. PhD and MPhil awards will have to come up the dais in 2 groups as the numbers are higher. So in order to make the photograph very clear, we have decided to invite you in the groups of 2. In the first group, students of School of Humanities, School of Social Sciences, School of Education and School of Sciences will be there. Students of the rest of the schools will be in the other group, and they'll come after the first group is done with the photograph. To save the time, I once again request you all, the other group members of MPhil and PhD, to be ready in the queue, and as soon as the photograph of group 1 is done, you please come up the stage for your photograph. Besides, I would like to inform you all that at the back of your seat, a QR code is pasted. So if you want to get the details of the program that is being held today, you may kindly scan it and see the details of the program. आप सभी के सीट के पीछे QR कोड लगा हुआ है, कृपया उसको स्कैन कीजिए। Well, Ashish, since this day is all about the students, their achievement and their sense of fulfillment, don't you feel it is actually important to really call them up and talk to them and listen their point of view? बिल्कुल मैम, इन छात्रों के अनुभव को सुनकर नए छात्र छात्राओं को भी अवश्य उनसे प्रेरणा मिलेगी। First of all, may I invite Miss Aishwarya Lakshmi. Can you quickly come up the dais, please? You can use that podium. Okay, thank you. Miss Lakshmi, first of all, many congratulations for you for receiving the SEMCA Cash Award. Thank you. Will you please share your experiences with us today? Sure. Thank you. First of all, I am extending my gratitude to all my teachers and my family who are seated there. And I am very much happy, and I am very nervous to stand here. But I think I have to use this occasion
to extend my gratitude to my friends, my family, and also to my study center. I am from, actually I'm from Kerala, and my study center is IIT Kottayam, and my regional center is RC Cochin, and I am very much happy to receive this gold medal and also this cash award. I really not expected this, and I am so that I am a bit nervous, and also I am not prepared to tell a speech or speak like this, and this is my first experience, but I think I have to use this to share my experience. First of all, I have to extend, I have to say about IGNOU. And as a learner, I think I will always recommend IGNOU as a distant university for the people who are preparing for or who are ready to join or who are ready to join a degree or masters, and also in IGNOU we can study in the courses in distant, and also we can prepare for other courses also. So I am prepared for competitive exams along with this MCA, and I can simply achieve this position. So I think all of the people from Kerala also and also everywhere in this country can use this university for studying and grabbing this occasion. So so I am using this opportunity to thank my teachers, my family, and also my friends. Thank you. Thank you, Aishwarya, and many congratulations once again. May I very quickly call Ms. Shermi Salim. But before that, a request to please put your mobile phones on silent mode, please. Ms. Shermi, please come. Many congratulations. Thank you. Good morning, everyone. I am, first of all, I am thanking Almighty for this occasion. And I am first at Delhi, and with my family. I have 2 kids, and my parents also come with me. Firstly, I am thanking IGNOU for a wonderful occasion in my life, and as a gold medalist, I am very proud of this moment for giving such an inspiration for my kids and whole struggling mothers. Shermi, I'm sorry, we have to cut it down here. The academic procession is entering the hall. Okay. So we have to follow. Can you wait here for a second, please? Please continue. Okay, thanks. There was a confusion, Shermi. You may please continue. Okay. As a learner of IGNOU, I am from Kerala. Study center is at Ayathil Kollam, CCRD 401, and a regional center at Trivandrum. During COVID time, also we got online classes from regional center. It helped me a lot for improving my studies and all. And for the learners of IGNOU, hard work and sincere work will get this award. We will mustly get this award. I am very proud and happy for this moment. Okay, thank you. Thank you for sharing your experiences. May I quickly invite Ms. Rohini Sabharwal ji. Would you like to come up the stage and share your experiences? Sorry, my mistake. Rohin Sabharwal. Good afternoon, everyone. I'm highly thankful, and I would want to extend my gratitude to my family, the university, and God that I've got this opportunity to be here. It is the first time I walked into IGNOU headquarters,
and it is a massive place. I never thought of it to be a place like this, to be very honest, and it has been a very wonderful journey. I am just 22 years and I already have 3 years work experience, and because of IGNOU University I could actually manage my bachelor's along with my work, and that is how I'm pursuing my master's as well. So I'm highly thankful to the flexibility that has been provided to me by the university. Thank you everyone, thank you my teachers, thank you my family, and God to shower his blessings. Many congratulations, Rohin, and all the best wishes for your future. May I also request Ms. R. Lakshmi Tapaswini. A very good morning, everyone. I'm extremely thankful to everyone present over here, and I'm extremely blessed as well. I'm extending my gratitude to my parents, teachers, whosoever supported me in the journey of my masters. I'm from Andhra Pradesh. I've done my undergraduation from Miranda House from Delhi University, and later on started my civils preparation. In the meanwhile, IGNOU has provided this wonderful opportunity to continue my students' learning process through their degree. I have done my master's in rural development. With their wonderful study materials, every possible source of knowledge I have received from IGNOU. I'm extremely thankful for it. I recommend everyone to get through IGNOU. Okay. I recommend everyone to get through IGNOU, to do their degree from IGNOU, parallelly doing or continuing their passion. Thank you everyone, thank you everyone. We are truly delighted to have you here, Lakshmi. Many congratulations and best wishes. Once again, I request you all to please put your mobile phones on silent mode to maintain the grace of this occasion. I would quickly like to have an interaction with Mr. Aditya Kumar, if he is present. मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप सबों को प्रणाम करता हूं। मैं बिहार के सिवान जिले का रहने वाला हूं और फिलहाल पावर ग्रिड में काम करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो बीइंग ए टेक्नोक्रेट, जैसे इंडियन फादर्स होते हैं, मेरे पिताजी ने मुझे इंजीनियरिंग कराया और मैं जेईएन बन गया एंड इट इज़ 5th ईयर ऑफ माई सर्विस, और मैं फिर से बैचलर किया हूँ इसमें इग्नू से हिंदी में। पहला थैंक्स ममता कालिया मैम, रीजनल डायरेक्टर जयपुर, उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और अपने स्टडी सेंटर लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज कोटपुतली, चूँकि 5 साल में मेरा 5 बार स्थानांतरण भी हो चुका है किंचित कारणों से, लेकिन उसके उपरांत भी मैं अपनी शिक्षा जारी रख पाया हूँ। इसके लिए इग्नू को धन्यवाद। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि सुदूर जिस प्रांत से मैं आता हूं, वहां पर जो पूर्वांचल का बेल्ट है, सिवान, चंदौली, बलिया, जहां विश्वविद्यालय, क्षमा करेंगे हमें, अन्य विश्वविद्यालय 5 साल लगा देते हैं डिग्री देने में, इग्नू ने 3 साल, और अपने जो भी चाहे आपके मास्टर्स हो, हमारी बहन ने इससे पढ़ाई करी है, तो मैं निजी तौर पर इस विश्वविद्यालय से काफी जुड़ा हुआ महसूस करता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। थैंक यू। Thank you, Aditya. Many congratulations. The academic procession is entering the hall. You are all requested to kindly rise and keep standing till the members of all the academic procession takes their seats. I invite Dr. Devesh to kindly recite the Mangalacharan, please. Vedic Mangalacharan, please. नमस्कारान्। हरिः ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षेभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः।
शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा जत्रानश्चक्राजरशन्तनूनाम् पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासो मतिर्यूयता देवानाग्नुं रातिरभिनो निवर्तताम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्न आसुव आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। संचार केंद्र से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय के कुलगीत को प्रस्तुत किया जाए तथा आप सभी से अनुरोध है कि कुलगीत प्रसारण के दौरान कृपया अपने स्थान पर खड़े रहें। यह जन जन का विश्वविद्यालय यह जन जन का विश्वविद्यालय सरल सुगम शिक्षा का आलय जन जन का विश्वविद्यालय जन जन का विश्वविद्यालय ज्योत जलाए ज्ञान की स्वाध्याय की अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को शिक्षा के अधिकार की ना उम्र का कोई बंधन ना बंदिश परिधि की घर घर है बना शिक्षा का देवालय यह जन जन का विश्वविद्यालय जन जन का विश्वविद्यालय जन जन का मान है सम्मान है पहचान है जन जन का मान सम्मान पहचान है राष्ट्र का आह्वान है वरदान है अभिमान है राष्ट्र का आह्वान वरदान अभिमान है सर्व सुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है वादा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महालय यह जन जन का विश्वविद्यालय जन जन का विश्वविद्यालय देश विदेश पटल पर भूषित नवाचार से सज्जित गुणवत्ता से परिपूरित ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन ज्ञान कोश से संचित ज्ञान कोश से संचित सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय शिक्षा का हिमालय यह जन जन का विश्वविद्यालय जन जन का विश्वविद्यालय
Thank you. Before the formal proceedings of the 35th convocation begins, may I invite Dr. Mallika Banerjee, Faculty, School of Performing and Visual Arts, to render the invocation of Ma Saraswati. सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तुते। वरदे 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 वीणावादिनी वरदे वरदे स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वर दे वर दे वीणावादिनी वर दे वरदे काट अंध उर के बंधन स्तर काट अंध उर के बंधन स्तर महाजननी ज्योतिर्मय निर्जर कलुष भेदतम हर प्रकाश भर कलुष भेदतम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वीणावादिनी वरदे वरदे नवगति नवलय ताल छंद नव नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र नव नभ नभ के नव विहद वृंद नभ नभ के नव विहद वृंद नव पर नव स्वर दे वीणावादिनी वरदे वरदे वीणावादिनी वरदे 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 धन्यवाद। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर विद्या भगत नेगी जी से अनुरोध है कि वे आएं और दीक्षांत समारोह की विधिवत कार्यवाही प्रारंभ करें। Vice Chancellor Sir, I request you to declare the convocation open and present the progress report of the Indira Gandhi National Open University.
With the permission of the Honorable Chief Guest, Minister of Education and Minister of Skill Development and Entrepreneurship, Sri Dharmendra Pradhan Ji, I declare the convocation open. I am going to present before all of you the brief report with respect to the activities of this university during the last 1 year. Respected Honorable Minister of Education and Minister of Skill Development and Entrepreneurship, Sri Dharmendra Pradhan Ji, who is our distinguished chief guest for this 35th convocation, His Excellency Sri La Ganeshan, Government of Manipur, who is the distinguished guest at the Manipur Regional Center, Imphal, honorable guests of honor at the remaining 31 regional centers across the country, Your Excellencies, members of the Board of Management, Academic Council and the Planning Board, distinguished guests, Pro-Vice Chancellors, directors of the schools, heads of the divisions, centers, units, recipient of the degrees and diplomas of the university, faculty members, academics, non-teaching staff of the university, media personnel, ladies and gentlemen. It's my pleasure to welcome you all at the 35th convocation of the Indira Gandhi National Open University at the headquarters, New Delhi, and at 32 regional centers across the country. It is indeed an honor and privilege to have Honorable Minister of Education and Minister of Skill Development and Entrepreneurship, Sri Dharmendra Pradhan Ji, as our chief guest for gracing this occasion and inspiring the learners across the country and abroad with his benign presence. It's a glorious moment for all of us, sir. Under your able guidance and visionary approach, we have been able to achieve milestones in higher education in challenging times. We have a strong student support network of 67 regional centers, 56 regional centers of our own and 11 recognized regional centers established with Army, Navy and Assam Rifles, around 2,140 learner support centers also. In this report, I am going to state a few facts about our university first. The university is having the mandate of democratization and the quality in higher education. That is why in its first cycle of accreditation, last year, IGNOU was accredited by NAC as A++, the first open university having this grade in its first cycle. We are offering 281 academic programs, and during the last year, we could have the registration, the fresh as well as re-registration, more than 13 lakhs, which is the highest since its inception. The cumulative enrollment of this university is 34 lakhs. There are 21 schools of studies, academic counselors, they are 52,000. The students who are being conferred degree in this convocation, degrees, diplomas, certificates, their number is 2,91,588. Again, it is the highest number since the 34th
convocations. During this reported period, again 25 to 23 ODL programs and 18 online programs, they were launched. This is also the highest in number in terms of the new programs which were launched during one academic session. I am happy to share with all of you that Ministry of Education has recently entrusted us to act as central nodal agency for NMEICT project third phase only a week back, through which all the activities under NMEICT that will be coordinated by the Indira Gandhi National Open University. On 21st of this month, we were also being recognized to have a center, that is Ambedkar Center for Excellence, for which an MOU was signed in the presence of the Honorable Minister of Social Justice in Varanasi on 21st of this month. This will be the first of its kind wherein the SC and ST students, for them the coaching activities, they are being performed by an open university by using the blended mode. We are also the national coordinator of the SWAYAM since 2016, and we are also the national coordinator of Swayam Prabha since 2017. Under Swayam, this year we could add 49 new courses, while in Swayam Prabha we are having the 4 channels with us, and these 4 channels, they are extensively being used to support our teaching learning activities. The most important accomplishment for this Open University is it was ranked number 1 in Atal ranking of institutions for innovation in 2021 by the Ministry of Education amongst all the central universities and all the institutions of national importance. We are having 750 teachers and academics. Teachers, they are headquarters, and the academics, they are spread all over in the regional centers. We do have our alumni network. It is the strongest alumni network, and in this year we had a dynamic alumni portal. We have put it on the Samarth portal. During the last 37 years, the number of students passed out from this prestigious university is 39 lakhs. And we are trying to rope in all these 39 lakh learners as our alumni. And if you add the present strength of 35 lakhs plus this 39 lakhs, the total number of learners present as well as our alumni, it comes to around 74 lakhs. So this is a big number of IGNOU family. And that is why it is called as the world's biggest university in terms of student strength. 48% women learners are there, 49% rural, and 2% tribal. All our degrees, they were put in the National Academic Depository from 20th convocation till this date. These degrees are around 25 lakhs. They are available on this NAD portal. Every year we are publishing 50.54 lakh blocks for 1825 courses, which are being distributed amongst the 13 lakh learners who are studying these
programs under ODL mode. For our 56 regional centers, 10 regional centers, they are having their own permanent building. And the construction process, it was started for the remaining 10 regional center buildings. We do have a plan to make these 25 regional centers, they will become the spokes for strengthening our digital framework, for strengthening our online programs all over the country. Because again, this will be the first of its kind, where the regional center and the headquarters both will coordinate to provide the learner support services to the online learners. We have also conducted the offline examinations during the last 2 years. Offline, because during COVID-19, education institutions, they all were affected badly, and conduct of online examination is a difficult task. But we could move ahead, and after every gap which we could get, we could hold our examinations regularly and also declare the results within the time schedule. Recently, we do have an offer to have become the knowledge partner from Capacity Building Commission, ministry which is looking into the capacity building initiatives all over the country. With respect to NEP implementation, IGNOU has established NEP cell. It has also developed its own institutional development plan, which is duly approved by almost all the statutory bodies of the university. We are also providing multidisciplinary and holistic education, for which we prepared a draft document for implementation of 4-year UG and 1-year PG, along with making our own undergraduate programs skill-oriented, plus we are also adding Indian languages as one of the components to strengthen the base of this undergraduate education. So skills, Indian languages, environmental issues, and the basic elective courses, all these, they are being integrated in our holistic system of education. Ability enhancement courses, discipline-specific elective courses, they all are added to it. Multiple entry and exit, 23 programs at PG level. Out of that, 22 they are at PG level, for which we have put this exit option also after 1 year. We were registered under the ABC portal of the UGC, and the course-wise registration and certification scheme, again it is a unique thing, because as the Swayam portal is there for the digital programs, we are also opening this window to have the option for the learners to go for the registration for each of these courses. Instead of going for the programs, the learners can themselves register for any of these courses. And during the last, and we are also certifying it, this is going to facilitate the credit transfer, as well as it will also strengthen the multidisciplinary focus of higher education. If a student of BCom wants to study Hindi or political science, he can register for a course in that course-based registration system, and those credits that can be transferred to make that program multidisciplinary also. Internationally, since our journey started 15 years back, 80,000 learners, they were registered with us. And during the last 1 year, 4,000 learners, they were registered for these international operations. We are having 3 channels for the purpose. One is through Guyana, the country of Guyana, for which Honorable Minister himself has taken the initiative to push that proposal. More than 1,000 learners, they are being added through that. We are having 23 study centers, and through these 23 study centers, we are getting around 1,500 students. So, and again, we are also trying to reach
to African countries through Vidya Bharati. That is again Ministry of External Affairs proposition. The cumulative enrollment, as I have told you, it is around 4,000. University is also using its own LMS platform to offer 26 programs to around 1,000 students registered under the Government of Guyana Scholarship Scheme. 9 regional centers and 167 learner support centers, they are in the northeastern region. 340 learner support centers, they are specifically for disadvantaged groups. And we are also having 163 centers for the jail inmates, for which the university has got a philosophy that these liabilities that be converted into the national assets, and therefore providing higher education without charging any fees. We are supporting this endeavor also. OBC 23%, SC 16%, ST 8%. That is the breakup of our learners. We have also offered fee waiver scheme, wherein more than 1.5 lakh learners, they are registered for the purpose. We do not charge any fees, and with the specified limit of the ministry, and this scheme is offered only to BA, BSc and BCom. Even then, the large number of learners, they are coming to us because our concern is to reach the unreached and to provide support to the socially disadvantaged groups of the society. IGNOU is also having an exclusive institute, staff training and research in distance education for training of faculty. STRIDE has been entrusted with the task of training 15 lakh faculty members in HE on NEP implementation plan, which Honorable Minister has entrusted this work, and this we are going to launch within a month or so. Already preparatory work is already completed, and we are moving ahead in this direction. All our programs of the STRIDE, they are being recognized by the UGC also. We are also the knowledge partner to the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in the implementation of skill acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion. With the help of 500 master trainers, they will be the district magistrates and the chiefs of each district. For them, the IGNOU is going to provide the training facilities, and this project is costing around 10 crores or so. And Honorable Minister, he has sanctioned this project to us when he joined in the beginning itself, in the month of August itself. Skill enhancement courses in different Indian culture and arts aspects are also offered to the learners at undergraduate level. We are promoting Indian languages, and the most important initiative is that from January 6, 2022, Swayam Prabha channels, they are being used to teach the undergraduate subjects in social sciences in mother tongue. Sociology is being taught in Malayalam, Telugu, Tamil, Punjabi, Odia, through the regional centers and with these channels which are available to us. And by this date, around 800 sessions we have conducted during the last 3 months. And every discipline, every language, for which around 70 lectures they have been delivered, meeting specifically the requirements of those basic social science subjects which are very, very popular. And recently we have also tried to add the interactive sessions for the purpose, so that the queries can be raised and those queries they can be answered by the experts. We are also having a digital reservoir, e-Gyan Kosh. And this e-Gyan Kosh, for which the material is also put in e-content app. And this e-content app, it is being downloaded by the learners. All the course material of IGNOU in soft copy. That is available in the soft copy, and 17 lakh learners, they have already downloaded it. e-Gyan Kosh, I have told you that more than 93 lakh users are there.
and 17.6 crore page views they are being seen in this eGyan course, which includes all the course materials, all the videos, and all the available resources, academic resources. This is going to strengthen the base of our online education in due course of time. 34 new online programs they are being put on offer through our own learning management system. During this year itself, we have added 18 new online programs. They include MBA, MCA, BCA, MA Rural Development, etc. We have added 49 new SWAYAM courses, and total SWAYAM courses are 151. And till date, around 10 lakh students, they were enrolled for these SWAYAM courses. And during the last year itself, 4 lakh new learners they were added. We are also having Electronic Media and Production Center, through which we are having the oldest channel, Gyan Darshan channel. And this channel is extensively being used by the learners. During this COVID-19, most of the states in the country, they have used this Gyan Darshan channel to supplement their educational requirements in higher education. We are also having a mechanism, a specific mechanism to reach to the learners, that is web-enabled academic support. And this portal, it is for each program. And by this date, 35 programs for which we are having this web-enabled academic support, wherein the teacher and the learners, they interact, and through only that portal, they are getting all the related information, material, admissions, assignments, everything, and the direct interaction with the concerned faculty also. It is the first open university in the country to launch a podcast series based on the motto Freedom to Learn. As on date, 1.7 lakh user visits and 2.17 lakh page views are also available. As I have already told you that we are having the alumni portal, and alumni registration is already there. During the last 7 months or so, we could have 33,000 new alumni registered for this. Samarth platform, again, it is being provided to us by the ministry. And this support has given us a lot of impetus. Our admission portal is now running smoothly. Our recruitment portal is also running smoothly. Our alumni portal is giving us a lot of support. And lastly and most important thing is our payroll is now being monitored through SWAYAM. So all our employees now, they are using this, the payroll system of this Samarth portal. We are using extensively our social media. And social media, we are having more than 80,000 followers. And on Twitter, we are also having 86,000 followers, which is the largest number amongst the universities in the country. Startup series included launched by National Center for Innovation in Distance Education. So far, 36 Facebook sessions they have been conducted. We have also started using online paper delivery system, lot of saving in terms of the paper. 2/3 of the courses for which no printing of the paper is being done at the headquarter level. Delivery it is being done through online, and the concerned examination centers, they only download those papers. Similarly, as I already told you, that we are also offering 15% concession for the use of the soft copy of the materials. That is an optional fee to the extent of 15% is being not collected. It is being given discount. So far, 7 lakh learners, they have used this facility during the last 2 years. And 6 crore pages, they have been saved because of this particular initiative. And this is an environment-friendly gesture also. One specific course to which I must narrate before all of you, that is PG Diploma in Animal Welfare. Only 1 year back, this program was launched, and Animal Welfare Board of the India Ministry of Fisheries, they recognized it. They wrote letter to all the states to study their employees, to study their officers, this particular course
And that is why the number for these courses that is continuously increasing. We are also providing educational opportunities for disabled students. We are having a separate center for that. 7,000 disabled students, they are enrolled in 2022. 12 special learner support centers, they are being established to support this initiative. We are also having the extension activities in terms of Ek Bharat Shresth Bharat. We are also developing a course which is to be started from July 22. We are also holding the regular sessions, the lecture sessions on Azadi Ka Amrit Mahotsav, 75 years of independence. On the 50th lecture occasion, Honorable Governor of Kerala, he was present over here and delivered his lecture. Our target is to make it 75. Unnat Bharat Abhiyan, we are also actively associated through our regional centers also. Lots of activities are there. I have narrated a few. The guidance and motivation of Sri Dharmendra Pradhan Ji, Honorable Minister of Education, has set a pace for all of us to learn, to experiment, to implement, and to move forward. On behalf of the IGNOU fraternity, let me express our gratitude once again to our Chief Guest, Sri Dharmendra Pradhan Ji, for accepting our invitation to grace this momentous occasion and inspire us. I once again express my gratitude to the distinguished guests at 32 regional centers across the country for inspiring, motivating, and encouraging IGNOU fraternity, including learners and alumni. At the end, I once again congratulate all our graduating students and wish them a healthy, successful, and blessed life. Jai Hind. Let all the successful candidates for the award of degree and diplomas be presented. Sir, I present to you 32,402 candidates in person and in absentia from School of Humanities for award of degrees, diplomas. I request that degrees, diplomas be awarded. Sir, I present to you 1,22,765 candidates in person and in absentia from School of Social Sciences for the award of degrees, diplomas. I request that degrees, diplomas be awarded to them. Sir, I present to you 5,237 candidates in person and in absentia from School of Sciences for the award of degrees and diplomas. I request that degrees and diplomas be awarded to them, sir. Sir, I present to you 9,733 candidates in person and in absentia from School of Education for the award of degrees, diplomas. I request that degrees, diplomas be awarded to them. Sir, I present you 26,588 candidates in person and in absentia from School of Continuing Education for the award of degrees and diplomas. I request that degrees, diplomas be awarded to them. Sir, I present to you 52,474 candidates in person and in absentia from School of Management Studies
for the award of degree diplomas. I request you that the degrees diplomas be awarded to them. Sir, I present to you 818 candidates in person and in absentia from School of Health Sciences for the award of degrees diplomas. I request that degrees diplomas be awarded to them. Sir, I present to you 5,536 candidates in person and in absentia from School of Computers and Information Sciences for the award of degrees and diplomas. I request that degrees and diplomas be awarded to them. Sir, I present to you 299 candidates in person and in absentia from School of Agriculture for the award of diplomas. I request that diplomas be awarded to them. Sir, I present to you 301 candidates in person and in absentia from School of Law for the award of diplomas. I request the diplomas be awarded to them. Sir, I present to you 253 candidates in person and in absentia from School of Gender and Development Studies for the award of degrees diplomas. I request that degrees diplomas be awarded to them. Sir, I present to you 271 candidates in person, in absentia, from School of Journalism and New Media Studies for the award of degrees and diplomas. I request that degrees and diplomas be awarded to them. Sir, I present to you 3,571 candidates in person and in absentia from the School of Social Work for the award of degrees diplomas. Sir, I request that degrees diplomas be awarded to them. Sir, I present to you 11,155 candidates in person and in absentia from School of Tourism and Hospitality Services Management for the award of degrees diplomas. I request that degrees diplomas be awarded to them. महोदय, डिग्री डिप्लोमा प्रदान करने के लिए अनुवाद अध्ययन और प्रशिक्षण विद्यापीठ के 2260 विद्यार्थी व्यक्तिगत और अनुपस्थित रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि उन्हें डिग्री डिप्लोमा प्रदान किए जाएं। Sir, I request to you 3,099 candidates in person and in absentia from School of Interdisciplinary and Transdisciplinary Studies for the award of degree diplomas. I request that degrees diplomas be awarded to them. महोदय, डिग्री डिप्लोमा प्रदान करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण विद्यापीठ के 232 विद्यार्थी व्यक्तिगत और अनुपस्थित रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि उन्हें डिग्री डिप्लोमा प्रदान किया जाए। Sir, I present to you 1,117 candidates in person and in absentia from the School of Extension and Development Studies for the award of degrees and diploma. I request that degrees and diplomas be awarded to them. Sir, I present to you 12 candidates in person and in absentia from School of Foreign Languages for the award of degrees diplomas. I request that degrees diplomas be awarded to them.
Sir, I present to you 5 candidates in person and in absentia from School of Performing and Visual Arts for the award of degree diplomas. I request that degrees diplomas be awarded to them. By virtue of the authority vested in me as the Vice Chancellor of Indira Gandhi National Open University, I award you the degree diploma and charge you to be worthy of the qualifications that you have earned. It's a momentous occasion for us also, and I am announcing it with great pleasure that IGNOU for the first time is distributing blockchain-based digital degrees and certificates to students who have registered for the 35th convocation along with physical certificates and degrees. The digital degrees are digitally designed, cannot be tampered, globally verifiable, and available on the personal wallet of the students in one click. In one click, digital degrees and certificates will be distributed to 60,570 graduating students who have registered for the convocation. To receive these degrees and certificates, the students can either go to the digital certificate site, for which the link is provided, or on the IGNOU website, or download the INSEE Wallet app from either the Google Play Store or Apple App Store. We are grateful to the Director of IIT Kanpur and his team for all the support in the major initiative in achieving this milestone. I now request the Honorable Minister Shri Dharmendra Pradhan Ji to remotely launch the transmission of this blockchain-based digital degrees and certificates. I now request the Honorable Minister to award the gold medals and cash awards to eligible candidates. Sir, I present to you the recipients of the gold medals in person. I invite the awardees to come on the dais one by one as their names are announced. Ms. Amarpreet Kaur, Master of Arts, Development Studies. Ms. Antara Sinha Gangopadhyay, Master of Arts in Psychology, and Professor G. Ram Reddy Memorial Gold Medal for the highest aggregate marks in the Master's Degree Program in Social Sciences subjects. Ms. Rayasam Eyankata Lakshmi Tapaswini, Master of Arts, Rural Development.
Ms. Aishwarya Lakshmi, Master of Computer Applications, and SEMCA Cash Award of Rs 25,000 for the Best Female Student in program related to Information and Communication Technology. Ms. Kanchan Lata Srivastav, Master of Arts, English. ये कौन सा है? Ms. Kaushiki Dubey, Master of Science, Hospitality Administration. Mr. Santosh Singh Badhoria, Master of Library and Information Science. Ms. Shermi Salim, Master of Social Work Counseling, and His Holiness the Dalai Lama Cash Award of Rs 10,000 for the gold medalist in Master of Social Work Counseling. Ms. Priyanka Dahiya, Master of Business Administration. Mr. Aditya Kumar, Bachelor of Arts. Ms. Tania Raju, Bachelor of Business Administration in Retailing. Ms. Shalu Talsian, Bachelor of Computer Application. Ms. Nishtha Gaur, Bachelor of Education. Ms. Arushi Garg, Bachelor of Science, Hospitality and Hotel Administration. Mr. Anurag Tripathi, Bachelor of Science. Mr. Naresh Kumar,
Bachelor of Social Work, and Dr. APJ Abdul Kalam Cash Award of Rs 10,000 for the gold medalist in Bachelor of Social Work. Mr. Rohin Savarwal, Bachelor of Arts, Tourism Studies. Mr. Nonigopal Shet, Ahimsa Trust Gold Medal for the topper in Postgraduate Diploma in Animal Welfare. Ms. Sharma Asmita Rajkumar, Professor R.K. Gover Cash Award of Rs 5,000 for the differently able student in Master of Commerce. Thank you, sir. I request the Honorable Minister to award the MPhil and PhD degrees to eligible candidates. Sir, I present to you candidates in person for the award of MPhil PhD degrees. I now request the awardees to come to the dais as their names are announced. School of Humanities, Ms. Gayatri Kanwar, Doctor of Philosophy in English. Mr. Buddhi Ram, PhD in Hindi. Ms. Kaushambi Dikshit, PhD in English. Mr. Surendra Kumar Rohila, PhD in English. Ms. Garima Singh, PhD Hindi. Ms. Mamta, PhD in Hindi. Mr. Santosh Kumar, PhD in Hindi. Mr. Manish Chandra Shukla, PhD in Hindi. Mr. Pavan Kumar, PhD in Hindi. School of Social Sciences, Ms. Rinki Sharma, MPhil in Economics. Ms. Sunanda Das, MPhil Sociology.
Mr. Sumit Goel, PhD Economics. Mrs. Sumit Goel. Mr. Pankaj Lakheda, PhD Political Science. Mr. Vivek Mohan, PhD History. Mr. Rajiv Kumar, PhD in History. Mr. Nihal Alam, PhD in Library and Information Science. Mr. Sushant Kumar Panigrahi, PhD in Library and Information Science. Mr. Nitin Paliwal, PhD in Library and Information Science. Ms. Pratibha Madan, PhD in Economics. Ms. Sandhya Varshne, PhD in Economics. Mr. Karan Sabharwal, PhD in Economics. Mr. Umesh Kumar, PhD in Anthropology. Mr. Biswajit Debnath, PhD in Public Administration. Mr. Vikas Singh, PhD in Library and Information Science. Thank you, sir. I present to you candidates for the award of MPhil and PhD and request you to award the degree to the eligible candidates. School of Education, Sri Chandrasekhar Yadav, MPhil Distance Education. Mrs. Rehana Tausin, PhD in Education. Birendra Kumar, PhD in Education. School of Sciences, Mr. Nayan Das, MPhil in Geography.
Richa Jain, PhD in Physics. Nabeen Kumar Dubey, PhD in Chemistry. Yogesh Kumar, PhD in Chemistry. G. Lakshmi, PhD in Life Sciences. School of Management Studies, Madam Salu, MPhil in Commerce. Shailaja, MPhil Commerce. Anupriya Arora, PhD Commerce. Shivani Bed, PhD Commerce. Baljit Kaur, PhD Commerce. Sally Oberoi, PhD Commerce. School of Continuing Education, Pradeep Singh Malan, PhD in Rural Development. Muhammad Ashraf Dar, PhD in Rural Development. Prashant Sahu, PhD in Rural Development. Sipra Gupta, PhD in Nutritional Sciences. Thank you. Beena Kumari, PhD in Nutritional Sciences. Thank you, sir. कुमारी लिखा किरण कबक, पीएचडी जेंडर और विकास अध्ययन। कुमारी दिव्या के, पीएचडी महिला अध्ययन।
कुमारी रजनी यादव, पीआईडी पत्रकारिता और जनसंचार। कुमारी रिप्ले एरिक्सन, पीआईडी नर्सिंग। कुमारी एलिजाबेथ मेली बर्गेस, पीआईडी नर्सिंग। कुमारी बदी बुक्कारसी पी, नर्सिंग, पीआईडी। कुमारी रोहिणी शर्मा भारद्वाज, पीआईडी नर्सिंग। श्री विजय कुमार सोनी, पीआईडी अंतर विद्याश्री और बहु विद्याश्री अध्ययन। श्री प्रदीप सी नायर, पीआईडी अंतर विद्याश्री और बहु विद्याश्री अध्ययन। कुमारी अनुजा त्रिपाठी, पीआईडी अंतर विद्याश्री और बहु विद्याश्री अध्ययन। कुमारी स्वाति मित्तल, पीआईडी प्रदर्शन एवं दृश्य कला। श्री जी श्रीकांत, पीआईडी फाइन आर्ट्स। कुमारी सुगंधा गुमेर, पीआईडी फाइन आर्ट्स। श्री सुनील कुमार, पीआईडी फाइन आर्ट्स। कुमारी डिम्पल मिश्रा, पीआईडी समाज कार्य। श्री राजीव राज अत्रे, पीआईडी समाज कार्य। श्री दर्शन सिंह, पीआईडी पर्यटन और अतिथि सेवा प्रबंध। मिस संदीपिका कुमारी, पीआईडी पर्यटन और अतिथि सेवा प्रबंध। श्री विकास प्रसाद, पीआईडी पर्यटन और अतिथि सेवा प्रबंध। मिस श्वेता कमर, पीआईडी पर्यटन और अतिथि सेवा प्रबंध। मिस मोनू राय, पीआईडी पर्यटन और अतिथि सेवा प्रबंध। मिस शिल्पी भाटिया, पीआईडी पर्यटन और अतिथि सेवा प्रबंध। कुमारी कविता, पीआईडी अनुवाद अध्ययन।
कुमारी थोकचोम प्रेमलता देवी, पीआईडी अनुवाद अध्ययन। मिस आयुषी अग्रवाल, पीएचडी अंतर्विद्याश्री और बहुविद्याश्री अध्ययन। मिस करमन कौर, पीआईडी अर्थशास्त्र। मिस उषना सैकिया, पीआईडी भूगोल। मिस उमेश, पीआईडी भूगोल। धन्यवाद। I request Honorable Chief Guest Shri Dharmendra Pradhan Ji, Minister of Education and Minister of Skill Development, to deliver the convocation address. नमस्कार। इग्नो के 35th कन्वोकेशन की इस मंच में उपस्थित इग्नो के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, बीपी दास जी, प्रो वाइस चांसलर, विभिन्न स्थान में बैठे हुए आदरणीय राज्यपाल महोदयगण, डायरेक्टर ऑफ डिफरेंट स्कूल्स, रजिस्ट्रार, रीजनल डायरेक्टर्स देश भर में विभिन्न जगह पे उपस्थित हैं, टीचर्स, एकेडमिक्स, अधिकारी मित्रगण, विभिन्न स्थान पर बैठे हुए विद्यार्थी साथीगण, अन्य महानुभाव तथा मीडिया के मित्रगण, कोई भी व्यक्ति की जिंदगी में जब कुछ स्वीकृति मिलता है, कुछ उपलब्धि होता है, उसी को एक उत्सव के रूप में कन्वोकेशन, समावर्तन के रूप में उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, डिग्री दिया जाता है और उसमें गोल्ड मेडल दिया जाता है। निश्चित रूप में उस व्यक्ति की जिंदगी में वो एक अनोखा पल होता है। ऐसे आज जिन मित्रों को लगभग 2,91,588 मित्रों को आज डिग्री दिया गया, उसमें से 60,000 से ज्यादा विद्यार्थिनियों को अभी तक अपने, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, अभी तक टेक्नोलॉजी को इग्नो ने में भी अपनाया है। ब्लॉकचेन की माध्यम से उनको अभी तक डिग्री मिल चुकी होगी, उन्होंने उसको अपने फेसबुक में पोस्ट भी कर चुका होगा
ऐसे सभी मित्रों को मैं शुभेच्छा देता हूं, बधाई देता हूं आपकी नई जिंदगी के लिए। मेरा अनेक अनेक अभिनंदन। मित्रों, मैं 4 मिनट पहले इस मंच पे आया भाषण देने के लिए। थोड़ा बहुत मेरे को समय भी राव साहब ने 30 मिनट दिया है और मैं 30 मिनट कहूंगा तो आप इधर से उठ के चले जाएंगे, इसलिए मैं वो काम भी नहीं करूंगा। मैं एक आगे बढ़ने की पहले एक बात कहूं, 2 बात कहूं। एक तो मैं आज यहाँ आई एम हियर एज ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी के नाते यहां आया हूं। स्टूडेंट इज ए मेंटल स्टेट, इट्स ए कंडीशन, इट्स ए माइंडसेट। Whenever, wherever, from whomever, if you are open to learn, then you are a student. So every citizen should be lifelong student. So I am a student. I am fortunate to be part of this convocation program, convocation ceremony. मैं विद्यार्थी के नाते एक चीज मैं स्वीकार करता हूं, और अच्छा विद्यार्थी जो होता है टीचर के सामने सच कह देता है। तो मैं आप मेरे सारे प्रोफेसर राव और उनकी तमाम साथियों के सामने एक सच कहना चाहता हूं। मैं स्टूडेंट लीडर रहा, स्टूडेंट लीडर से आज देश की शिक्षा विभाग की दायित्व में हूं, मंत्री की भूमिका में हूं। लेकिन मैं इग्नो के बारे में इतना नहीं जानता था, इसको मैं स्वीकार करता हूं। और इग्नो की इतनी संभावनाएं हैं, और मैं यहां अनेक कन्वोकेशन में मैं पिछले कई सालों में दर्शक, मेरे कभी कभी ईर्ष्या होता है कन्वोकेशन में आने में, क्योंकि मैं सौभाग्यशाली नहीं था डिग्री इस प्रकार के कन्वोकेशन में लेने के लिए। जब मैं स्टूडेंट लीडर कह ही रहा हूं तो मेरे बैकग्राउंड भी आप समझ रहे होंगे। तो आप शायद उस समय में हमारे वाइस चांसलर को लगा कि ये ना रहे तो अच्छा है, ये आएगा तो 3 चीज और पूछेगा, इसको छोड़ो, इसको इस ब्याज को नहीं दो। उस समय में मंडल कमीशन के आंदोलन हो रहा था, तो 1-2 साल हमारे कैंपस की स्थिति ऐसा रही 90s में, लेट 80s और 90s में कन्वोकेशन ही नहीं हुआ। तभी कभी भी मैं कन्वोकेशन में जाता हूं तो मेरे मन में एक विद्यार्थी सुलभ एक ईर्ष्या होती है, काश मेरे को भी इस प्रकार की कन्वोकेशन में एक डिग्री मिलता। और मैं यहाँ पिछले अनेक कन्वोकेशन में मैं दर्शक के नाते, अतिथि के नाते, माननीय राष्ट्रपति जी के साथ में भी गया हूं। लेकिन मैं आज निसंदेह ये कहूं, अगर अब तक का सबसे कोई बढ़िया, मन को कॉन्फिडेंस देने वाला, आत्मविश्वास से भरने वाला और भविष्य की अनेक संभावनाओं को दिखने की कहीं मैं एक कन्वोकेशन में बैठा हूं, तो आज ही का दिन है। मैं बहुत बहुत प्रभावित हूं इग्नो की इस पैटर्न पे। दूसरा, इग्नो, अभी तो हनुमान चालीसा को लेकर देश में विवाद हो रहा है, हनुमान चालीसा गाया जाए ना गाया जाए, ये भी खास डेमोक्रेसी की। हमको जिन लोगों ने कभी कभी हमारी देश में टॉलरेंसी के बारे में, सहनशीलता के बारे में बताते हैं, लिखते हैं, सुझाव देते हैं, कभी कभी पाश्चात्य जगत से भी सुझाव आता है। कभी कभी मेरे मन में लगता है कि हमारी भारत की प्रजातंत्र में ये तो इनबिल्ट ही है, नहीं तो आज हमारे देश में हनुमान चालीसा गाया जाए ना गाया जाए उसकी भी विवाद हो रही है। चलो, हनुमान चालीसा एक अलग विषय है आज के दिन के लिए, लेकिन आप सब, प्रोफेसर राव समेत आप सभी लोग, विशेष करके जो प्राध्यापक और प्राध्यापिका प्रोफेसर्स हैं और जहां जहां सेंटर्स में बैठे हैं, आप सच में हनुमान पुत्र हो, आप अंजनी पुत्र हो। अंजनी पुत्र की एक गुण है, वो तो समाज को संभालने वाले, बचाने वाले। और ये कहा जाता है कभी कभी कि साहित्यकार ने कहा कि हनुमान आदिवासी है, पिछड़ों की, गरीबों की, वंचितों की प्रतिनिधित्व करने वाला शक्ति के नाम है हनुमान। और उस हनुमान को अपना ताकत खुद मालूम नहीं था, कभी कभी उसको याद दिलाना पड़ता था कि आप क्या कर सकते हो। जब उसको कोई ललकारता था, उसको कभी कोई
समझाता था तो फिर असंभव काम करता था। आप इग्नो वाले हनुमान हो, आपको मालूम ही नहीं आप क्या कर सकते हो और क्या कर चुके हो। आपने जो किया आज आइए उसको सेलिब्रेट करेंगे। मैं शुरू में कहा था मेरे पास थोड़ा समय है, अभी और 15-20 मिनट बचा है, इसलिए मैं 5 मिनट निवेदन करूंगा। 2-3 मित्र जो आज जिनको आज हमने अवार्ड दिया, ज्यादा नहीं करना क्योंकि भाषण हम लोगों को ज्यादा करना होता है, आप नहीं ज्यादा करना। ये भी आपकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी हुई, आपकी कैपेसिटी क्या है वो भी परीक्षा होगी। शायद वो डिग्री के बारे में पुनर्विचार भी किया जाएगा अगर आप नहीं, ऐसा नहीं करेंगे प्रोफेसर राव। मैं 3 मित्रों को, 2 बहन और 1 भाई को निवेदन करूंगा, आपकी इग्नो के अनुभव क्या है। जिनको आज 2 ऐसे आए जिनको गोल्ड मेडल मिला है और इनमें से एक आए जिनको पीएचडी मिला है। मैं 2 जब मैं थोड़ा मेरे तो इच्छा हो रहा था सभी को पूछूं आप कौन हो, इग्नो क्यों आए, क्या अनुभव रहा। मेरे इतना मैं उसमें भावुक हो चुका था कि सबको पूछने को मेरे को इच्छा हो रहा था। कुछों को पूछ भी लिया मैंने। जो बहन हमारी अभी कही वो भी कही कि मैं थोड़ा कहना चाहता हूं इग्नो के बारे में। माइक है, माइक दो उनको, वहीं से खड़े होके। है कॉर्डलेस माइक है आपके पास, चलता कि नहीं चलता टेस्ट कर लो। माइक अक्सर चलता भी नहीं है। नहीं आप बैठो, वो जो आपको मैं बुलाऊंगा, आपको आप जो मैनेजमेंट साइंस की जो हमारे बहन है वो बताए, संक्षेप में बताना बहन, इग्नो की एक्सपीरियंस क्या रहा। Hi, hello everyone. And first of all, I would like to thank everyone who are present here. Put the mic little bit nearer. Okay, yeah. I'm feeling a bit nervous now, but I need to tell you that my name is Priyanka and I have been working as a business analyst from past 5 years. My father kind of encouraged me to pursue my studies along with my working experience, and then I started preparing for MBA entrance exams, and I got an opportunity to pursue that from Symbiosis University, which is a regular university and one of the great institutes of India. But then when I calculated the return of investment, I kind of thought that maybe it would give a halt to my working experience, and I would rather prefer doing my master's from IGNOU, which provides the opportunity to pursue the degree along with your working experience. That actually has been a very great advantage for students like me. So now, after getting this degree, I am having total of more than 5 years of experience, which is countable enough for pursuing and applying for the positions for the senior managerial roles. So if I would have chosen something which is a regular course, then my past experience would not have counted in the industry. But now, because of the IGNOU University, I would like to thank everyone, and especially my father, who encouraged me to do that from an open university. So yeah, thanks a lot. Thank you. आगे आप लाओ, आगे. Yes, good afternoon everyone. I am Antara Sinha Gangopadhyay और मास्टर्स ऑफ आर्ट्स साइकोलॉजी में आज डिग्री मिल रही है मुझे, बहुत खुशी भी हो रही है। इग्नू के बारे में ये बोलूँगी, I'll go bilingual if it is possible. So कैलकाटा यूनिवर्सिटी से मैंने अकाउंटेंसी ऑनर्स किया और फिर उसके बाद 6 साल मैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में रही, काम किया। फिर रियलाइज़ होने लगा कि इतना कम्पिटिटिव जॉब मार्केट है, इसके लिए ग्रेजुएशन काफ़ी नहीं है। तो फिर साइकोलॉजी हमेशा से, क्योंकि बच्चों के साथ काम करना अच्छा लगता था और साइकोलॉजी पैशन था, इग्नू ने वो अपॉर्चुनिटी दी मुझे स्ट्रीम चेंज करने की, जो रेगुलर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आपको काफ़ी दफ़ा नहीं प्रोवाइड करवाते हैं।
आई एम वेरी थैंकफुल मेरे रीजनल सेंटर को, सारे प्रोफेसर्स को बहुत तंग किया है सर के हिसाब से। अगर मैं बोलूँगी मैंने इतना तंग किया उन लोगों को मेल कर करके कि क्या है, कब नोटिस आ रही है। एंड सबके लिए इजी है बहुत कनेक्टेड रहना। अगर आप फ़ोन पे फेसबुक कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, तो किसी के लिए भी किसी भी कोने में इंडिया में अगर हैं, यहाँ पे भी बहुत जनों से इंट्रोडक्शन हुआ जो कहाँ से आए हैं, शायद पॉसिबल नहीं होता, बट इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है। और जो कोर्स है कुछ दिक्कत नहीं आई मुझे वो पढ़ने में। द करिकुलम इज़ वेल इट इज़ बहुत अच्छे तरह से उसका इट इज़ होल आई विल से, समझने में कभी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। प्रोफेसर्स जो आते हैं दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड। एंड कोविड के टाइम पे आई से टू मेक पॉसिबल टू गेट अ डिग्री इन द मिनिमम टाइम फ्रेम ऑफ 2 years, IGNOU मेड इट पॉसिबल। आई थिंक रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ उस टाइम पे काम नहीं कर रही थी। Yes. So, thanks to everyone for that. Everyone present here, congratulations. एक एनिमल, हाँ वो पीछे ले जाओ। Namaste, sir. Very good afternoon to everyone. Sir, myself, Noni Gopal Seth. I am from West Bengal. Sir, it is very much thankful to all the dignitaries. Basically, I would like to highlight, I have been graduated in BSc and AH from Kolkata. After then, I completed my Masters and PhD from IVRI, Indian Veterinary Research Institute, Ajitnagar. But after then, I joined as veterinary surgeon, Government of West Bengal. 5 years I have worked there. But still, I was awaiting to learn something regarding the animal welfare, as it is a burning issue. Every time we used to see how the welfare of animals, livestock we could manage. And during our posting at the borderline of Bangladesh and India, I have made lots of problem regarding legal issues of animal transport. But in my journey to highest academic degree PhD, I didn't have that much of scope, that much of opportunity regarding animal welfare. But luckily, I got that opportunity. IGNOU has give this opportunity and I enrolled for that. Now I have been enriched a lot. Now I have been included this in my veterinary university, and now I am acting as an assistant professor there. Now I am incorporated this for my UG students, and always I used to encourage our all professionals to have that much of opportunity, so that we have been very much knowledgeable regarding animal welfare. A lot of things we have know, but this side is very dark for all of veterinary professionals till now. So in this case, or in this perspective, I am very much thankful to IGNOU, and especially this School of Extension Education IGNOU. And I must mention Professor PVK Sashidhar for designing so nice opportunity. And sir, just I would like to thank this entire IGNOU, this chain or network from this very remotest part, Kuzbihar. It is just near to 20 kilometers from Assam. I didn't have any much of problem regarding getting this study materials, studying or examination, everything. From support service, I am very much thankful to all the systems of IGNOU. Thank you very much. Thank you once again. Thank you. ये PhD में नमस्कार सर, मैं नितिन पालीवाल वर्तमान में NIT हमीरपुर में हिमाचल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में काम कर रहा हूँ, और जो भी कुछ हूँ आज मैं वो केवल IGNOU की वजह से हूँ। 2004 से मैं IGNOU से जुड़ा हुआ हूँ, और लाइब्रेरी मेरा पैशन था कि कैसे मैनेज होती है। पढ़ने का मुझे शौक़ था। परिवार की हालत ऐसी थी कि मैं नहीं जा सकता था किसी टेक्निकल एजुकेशन के लिए, और 2004 में मैंने जॉब के साथ बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस IGNOU में ज्वाइन किया। फिर मैंने मास्टर यहीं से किया, और आज यहाँ IGNOU में आप सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं PhD की डिग्री लेके जा रहा हूँ। अब थैंक यू। आप आगे दे दो, माइक आगे दे दो। आप बैठे बैठे।
प्राध्यापक गुड आफ्टरनून महोदय बैठिए। एवरीवन, मेरा नाम सुमीत है, मैं दौलत राम कॉलेज में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हूँ। अब 6 साल पहले मुझे दिल्ली में काफ़ी चेंजेस, मैं यहीं पे काफ़ी बार कई स्कूल्स में पढ़ी थी डिफरेंट, और दिल्ली के पोल्यूशन से मुझे काफ़ी मतलब ये महसूस होता था कि इसके बारे में कुछ स्टडी करनी चाहिए, और तभी मैंने सोचा कि मेरा पीएचडी का टॉपिक यही होगा कि मैं एनवायरनमेंट को और इकोनॉमिक्स को लिंक करके किसी तरह से इस चीज़ को हाईलाइट करूं, जिससे कुछ आगे चल के इस मुद्दे पे कुछ पॉलिसी मेकिंग हो, जहाँ पे एक हमारा ह्यूमन राइट है कि एयर हमारी क्लीन होनी चाहिए, ये हमारा बेसिक राइट है। और अगर हमारे जो बच्चे हैं, जो व्हेन आई सॉ स्टूडेंट्स ऑल्सो कि कितनी सारी एलिमेंट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होते हुए भी मैंने सोचा कि इसको लिंक करके ज़रूर मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। और इग्नू से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, मेरे जो गाइड थे वो बहुत ही नॉलेजेबल आईआईटी से प्रोफेसर कौस्तव बारिक, जिन्होंने मुझे बड़ा अच्छा गाइड किया, और मुझे लगता है कि मैंने इस चीज़ पे कुछ प्रोग्रेस की है, और हमारे जो आगे नेशन है, ह्यूमन रिसोर्सेज और हेल्दी हो सके और हम एक साफ हवा में जी सकें, तो मैं एक ब्राइट फ्यूचर की होप करती हूँ इग्नू के साथ। थैंक यू। बस हो गया, फिर मैं भी तो थोड़ा दूंगा। तो इसीलिए मैं एक आपको अनुरोध करूं, आप मानेंगे, मैं एक आप सभी को जो आज डिग्री लिए यहाँ उपस्थित है, जो जहां भी है, 2,90,000 विद्यार्थी जो इस टेक्नोलॉजी में इसमें जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को सबसे पहले एक अनुरोध करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द डिग्री होल्डर्स टुडे, ऐसा तो किसी के पास नहीं होगा जो कोई फेसबुक में नहीं होगा, सब तो फेसबुक में होंगे ना। आप एक काम करना, आप फेसबुक के सामने खुद आपके एक टेस्टिमोनियल 1-1.5 मिनट का दीजिए, वाई यू आर ग्रेटफुल टू इग्नू, देंगे आप? ये बीच वाले ताली मार रहे हैं, जिनकी प्रशंसा होगी, जो प्रशंसा करेंगे, आप देंगे ना? पक्का पक्का आप लोग देंगे? सारे गोल्ड मेडलिस्ट देंगे? थैंक यू। मित्रों, मैं पिछले 10 महीने से शिक्षा विभाग से जुड़ा हूं प्रशासक के नाते, और हमारी सौभाग्य है, देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2020 जुलाई से देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 34 साल के बाद लागू किया। और अभी जो 5 मित्र, विद्यार्थी मित्र अपने अनुभव कह रहे थे, मैं अनुभव को दोहराना नहीं चाहूंगा। अब सभी के पास यू ऑल आर रिपोजिटरी ऑफ योर एक्सपीरियंस, अनुभव की आउटकम जो इग्नो पिछले 1985 से लेके आज तक करते आ रहा है, और आप जिसकी आप स्टेक होल्डर हो, जिसकी आप बेनिफिशियरी हो, इसी को एक पैन इंडिया लेवल पे तथाकथित बड़े यूनिवर्सिटी, नामी दामी यूनिवर्सिटियों को वही तो कहा गया है, इसी के नाम है मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट। आपकी इच्छा से पढ़ोगे, काम करते हुए पढ़ोगे। पढ़ाई के लिए कमाई को बंद करना ऐसे संभव ही नहीं है। ग्रेजुएशन होते होते बहुत सारे यूजी को आज यहां गोल्ड मेडल मिला। यूजी अपने काम शुरू कर दे, क्यों काम शुरू कर दे? निम्न मध्यवित्त परिवार के लोग हैं, गरीब घर के बच्चे हैं, अच्छे पढ़ते हैं, लेकिन घर की आवश्यकता इतनी है, मां बीमार है, पिताजी कितने को पढ़ाएंगे, बड़ी बहन की शादी भी है, जो सामने नौकरी मिलता है उसको कर ले, पढ़ाई को बाद में देखेंगे। ये सारे की रास्ता इग्नू ने दिया। ये सारा विषय इस बार प्रधानमंत्री जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पार्ट कर दिया है। तो इग्नू ने, और इग्नू के आज में विशेष करके टीचिंग फैकल्टी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने पिछले 35 साल में, 34 साल पहले नया पिछला शिक्षा नीति आई थी, और 35 साल तक आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, इस बार आपके एक्सपेरिमेंट बेकार नहीं गया है। नाउ दिस इज ए नेशनल सक्सेस स्टोरी, एंड नाउ दिस इज द पॉलिसी। यही यूनिवर्सिटियों के काम होनी चाहिए। आपको अनेक अनेक बधाई। मित्रों, 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ नॉलेज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 की पहला शर्त क्या है? ये छोटे छोटे पाश्चात्य की स्कैंडिनेवियन कंट्रीज
आबादी नहीं है, आबादी क्लाइमेट की दृष्टि से बहुत ही चुनौती वाला है। आधे दिन सूरज नहीं आता है, आधे दिन ठंड होता है, घर से नहीं निकाला जाता है, लेकिन दुनिया की निश टेक्नोलॉजी उन्हीं के हाथ में है। या नहीं तो संपूर्ण देश जो है, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, उन्हीं के पास टेक्नोलॉजी है। उनकी पॉकेट साइज के कारण उनके पास टेक्नोलॉजी है। भारत के पास सब चीज रहते हुए भी जो आर्किटेक्ट पिछले हम 75 साल में बनाए, कॉलोनियल पीरियड में जो आर्किटेक्ट बना सो बना, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस जिसके हम 75 साल अभी मनाने वाले हैं, मना ही रहे हैं, उस समय में हमने उस आर्किटेक्ट को निर्भर किया जिन्होंने हमारे नौजवान को, विशेष करके हुनर रखने वाले नौजवानों को, जो इनोवेटिव नौजवान, उनकी ग्रोथ को विशेष करके इकोनॉमिक स्ट्रैटा के नीचे वाले लोगों को हमने हाथ बांध दिया, उनको रेस्ट्रिक्ट किया, उनको शर्त रखा, आप इकट्ठा नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ोगे तो नौकरी नहीं कर पाओगे, आप फार्मेसी पढ़ोगे तो आप लाइब्रेरी साइंस नहीं जा सकते हो। अभी मैंने छोटे से एक्सपोजर में मेरे को ये अनुभव आया। अभी यूजीसी को इस बार हमने परामर्श दिया कि आप एंट्री लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में पीएचडी को प्री कंडीशन मत करो। हमें बहुत अच्छा लगा, यहां कम से कम एक साइजेबल नंबर की टीचिंग फैकल्टी है जिन्होंने इन सर्विस पीएचडी करने का मौका मिला। आप सभी को बधाई। क्या मैं सोच पाता हूं कैसे सोशल एगोनी क्या होता होगा। आप जानते हुए भी आपने पीएचडी नहीं किया, इसलिए आपको 7th पे कमीशन से आप डिबार होते होंगे, आपके इंक्रीमेंट बंद किया कर दिया गया होगा, सोशल स्टेटस में फर्क आता होगा, ये पीएचडी नहीं किया है। ये सारे के समाधान इस प्रकार की नया मेथोडोलॉजी पे मिलती है। मित्रों, आने वाले दिनों में भारत को अगर एक इकोनॉमिक सुपर पावर करनी है, तब हमारी एजुकेशन की पैटर्न का एक पैराडिम शिफ्ट की आवश्यकता है। ऐसा नहीं हमें कोई एक किसी से सीखने की आवश्यकता है। दुनिया में जिनके पास साइंटिफिक वर्ल्ड में जिनके पास जो अच्छा चीज है उसको सीखने की, उसको ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी इंडियन सिविलाइजेशन से हजारों साल से है, और हम दुनिया को अच्छे मॉडल्स देने की हमारी बुनियाद है। लेकिन हम चीजों को एक निर्दिष्ट दृष्टि से नहीं दिखनी चाहिए। इसीलिए जब मेरे को और एक अच्छा चीज लगा, जब आप लोग आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में गाते गाते आपने कहा जन जन की विश्वविद्यालय, ये सही है, आप सार्थक हो जन जन की विश्वविद्यालय जब आप खुद को कहते हो। आज शायद मेरे को प्रोफेसर राव कह रहे थे कि हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय है। मैंने पूछा चाइना का क्या स्थिति है, उन्होंने कहा कि चाइना का कोई हिसाब नहीं। सच में चाइना को कोई नहीं जानता है। अभी आज अखबारों में आई है संघाई में बहुत दिक्कत है। हम किसी के दुख में संवेदना दिखानी चाहिए, हमें भी चिंता है। ह्यूमैनिटी रिस्क में जब रहता है, और पिछले लगभग 2 साल से, अब जस्ट इमेजिन करो, आज हम अप्रैल में हैं, 2020 अप्रैल से 2022 अप्रैल हो गया, पूरा 24 महीना एक न्यू ऑर्डर आ गया है दुनिया में, इकोनॉमी में, सोशल लाइफ में, एजुकेशन में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, सारे जिंदगी के सारे आयामों में, पेमेंट्स में कुछ अच्छे हुए हैं, कुछ चैलेंजिंग चीज हुए हैं। ये सारे की रास्ता हमको यूनिवर्सिटी से निकालनी है, एजुकेशन सिस्टम से निकालनी है। इसलिए आज की भारत सरकार कुछ विषयों पे जोर देती है। मैं जब आपकी कन्वोकेशन में आया हूं, मैं आपको कहूं कि हम इग्नो को कैसे आने वाले दिनों में दिखते हैं। इस बार हमने एक साउथ अमेरिका की देश के साथ, गायना के साथ ओवरसीज टाई अप किया। मित्रों, हमारे देश में लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं। कल ही मैं एक असेसमेंट कर रहा था, हमारे देश में आज के दिनों में
विदेश विभाग के पास जो सूचना है 15-20 हजार स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं। कभी एक जमाना था, बहुत पुरानी नहीं है, जब कॉलोनियल रूल था तब, उसके बाद भी और अभी भी भारत की टीचर, अभी भी एक बहन आई है ओमान से, वहां टीचर है, वो इंडियन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता होगा, ओमानी स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता होगा। इंग्लिश भारत की फोटे है, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, ये सब भारतीय नौजवानों की विशेषज्ञता की विषय है। पूरा अफ्रीका में, मैं खूब अफ्रीका के देशों में घुमा हूं पिछले पेट्रोलियम की दायित्व में, मैं कहीं भी देखा कम्युनिटी में और वहां की नेबर्स, मैंने वहां की लोकल कम्युनिटी में भी भारतीय टीचर्स की आदर है। हमारी देश से पढ़ा हुआ विद्यार्थियों की संख्या वहां है, इन दिनों में वो थोड़ा घटी है। अभी कोविड ने एक विंडो दिया है डिस्टेंस लर्निंग की, डिजिटल एजुकेशन की, ई लर्निंग की। आपने भी उसमें से अच्छा किया है। आपकी एनरोलमेंट, आपने जब 13 लाख कहा, इन्हीं दिनों में कहा। व्यक्ति जब पुश टू द वॉल होता है तब इनोवेटर बन जाता है। अभी कोरोना ने हम सभी को कैसे नए प्रकार से पढ़ें, इसकी एक कंपल्सन हम लोगों के सामने खड़ा किया। इसलिए आज दुनिया में ई लर्निंग की एक अभिनव तरीके आ गए हैं। हमें इग्नो को यूज करते हुए दुनिया की वंचित वर्गों को, शायद अफ्रीका के लोग डिस्टेंस लर्निंग में भी यूरोप की या अमेरिका की या जापान जैसे हाई एंड इकोनॉमी की यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई को अफोर्ड ना कर सकते हैं, हम उसकी उत्तर बने। अगर हम अपने मेथड में, अपनी पेडागोजी में उनको पढ़ाएंगे, आप उसकी समझो हमारी उसकी इंपैक्ट क्या आएगा। अनजाने में आप भारत वहां पहुंचाने वाले हो। इग्नो भारत को दुनिया की हर एक गरीब लोगों तक पहुंचा सकता है, अंडर प्रिविलेज तक पहुंचा सकता है, जिसको जरूरत भी है। उसकी छोटी सी हैंड होल्डिंग, इजी वे ऑफ हैंड होल्डिंग, सेंसिटिव वे ऑफ टीचिंग, यह शायद उसकी जिंदगी में काफी परिवर्तन ला सकता है। उसकी अर्थनीति में, उसकी एम्पावरमेंट में, उसकी अपवर्ड जर्नी में, यह हम एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। इसीलिए आने वाले दिनों में ना केवल ओवरसीज एजुकेशन के लिए, देश के अंदर, आप जानते हैं देश के अंदर गैप एरिया क्या है। मैं इन दिनों में थोड़ा स्टैटिस्टिक्स को पलट के देख रहा था। यूनिवर्सिटी में यूजुअली यूजी में 18 साल प्लस के बच्चे आते हैं, और आपने तो डिप्लोमा कोर्स भी दे रहे हो, यानी आप सेकेंडरी एजुकेशन के बाद, 12th के बाद आप एंट्री दे सकते हो, यूजी में हो या डिप्लोमा कोर्स के लिए हो। आज हमारे देश में 15 से अगर 25 साल, क्योंकि हमारे देश में 14 साल तक चाइल्ड लेबर हम मानते हैं, 15 साल के बाद वो इकोनॉमिक यूनिट बन जाता है, एम्प्लॉयबिलिटी उसकी हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट एलिजिबल हो जाता है। अगर हम 15 साल की आयु को एक कट ऑफ टाइम पॉइंट माने, और मैक्सिमम कितना भी संपन्न घर की व्यक्ति हो, लड़का हो, उसको मैक्सिमम परिवार 25 साल तक आशा रखता है। 25 साल के बाद अगर वो कुछ नहीं करता तो उसको कहते हैं तो गया। 25 साल तक पढ़ता है, समझता है, सीखता है, ऐसे मार्जिन उसको मिलता है। 15 से 25 के अंदर हमारे देश में लगभग 25 करोड़ नौजवान होते हैं। पॉपुलेशन को अगर हम कैलकुलेशन करें तो 25 करोड़ नौजवान, यानी 130 करोड़ आबादी में 15 से 25, और इग्नो सहित आज मैं इग्नो को मिला के कहता हूं, इग्नो की सालाना 30-35 लाख विद्यार्थियों की नंबर को कैलकुलेट करके कहता हूं, विभिन्न प्रकार की 15 से 25 साल तक की जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, फॉर्मल और सेमी फॉर्मल, ये दोनों को अगर हम मिला के कहें तो उसकी नंबर होती है 11 करोड़। उसकी अर्थ है 14 करोड़ नौजवान जो इकोनॉमिक यूनिट है, जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में लगा है, वे कोई कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोसेस में नहीं है, कोई एजुकेशन, स्किलिंग
वोकेशनल स्टडी या कैपेसिटी बिल्डिंग उस प्रक्रिया में नहीं है। अब अनुमान करो क्या हम हमारी नौजवानों की 55% नौजवानों को बिना प्रशिक्षण हम बाजार में उतारे, कामकाज के लिए उतारे, एम्प्लॉयमेंट के लिए उतार दे, वहीं से प्रश्न आती है एम्प्लॉयबिलिटी। ये जो रियलिटी है, मैं उसकी उत्तर इग्नू जैसे सिस्टम से देख पा रहा हूं। हमारी चीजों को अनबंडल करना पड़ेगा। इसीलिए इंटरनल सिस्टम हो, देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, हमें डिजिटल एजुकेशन को माध्यम बनाते हुए, और आज तो टेक्नोलॉजी में नई नई चीज आ रहा है। आज हमारी घर में कोई 8-9 साल के बच्चों को अगर कोरोना के बारे में पूछो, वो आपकी प्रश्न के लिए इंतजार नहीं करता है, वो गूगल गुरु के पास जाता है। टेम्परेचर इतना हो गया तो ये सिम्टम है कि क्या करना चाहिए, वो 4 प्रिस्क्रिप्शन उसके पास आ जाता है, वो आपको बताता है इसे करना चाहिए। ये एक प्रकार से डिजिटलाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन है। हम इसको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से जोड़ना शुरू कर दें। इस बार बजट में 2 अनाउंसमेंट हुए हैं। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पे विशेष करके टीचिंग कम्युनिटी के सामने एक जिम्मेवारी के साथ में मैं क्यों आया हूं। राव साहब ने कहा कि आप आओ, मैं क्या मांग के आऊंगा, क्या सीखने के लिए मैं आया हूं, क्या अपेक्षा लेके आया हूं। एक ही अपेक्षा मेरा है, आने वाले दिनों में हमारी सपना है इग्नू को दुनिया की 1 नंबर लर्निंग इंस्टीट्यूशन बनाना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में बनाना है। इसीलिए इस बार बजट में प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा करवाया है, देयर विल बी ए डिजिटल यूनिवर्सिटी इन कंट्री, जो विश्व के समाधान निकालेगा। जिम्मेवारी, ज्ञान, संवेदनशीलता, एथिकल, ये सारा विषय हमारी डीएनए में है। ये सारे को फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम पे कैसे हम लेके आएंगे। ये डिजिटल यूनिवर्सिटी इग्नू अभी भी डिजिटल है, इग्नू अभी भी फेसलेस है, इग्नू अभी भी एक इनोवेटिव मेथोडोलॉजी में अपना पेडागोजी को पहुंचाता है, कोर्स कंटेंट को पहुंचाता है। लेकिन दुनिया की टेक्नोलॉजी में काफी परिवर्तन आई है। जैसे आज कुछ समय पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी मॉडर्न सोसाइटी में इनोवेटेबल चीज हो गया था। आज इंटरनेट के बिना हम किसी की जिंदगी संभव नहीं है। सिर्फ इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, सारा हमारी पेमेंट सिस्टम इंटरनेट ड्रिवन हो गया है। हमारी सारे किताब, नॉलेज रिपोजिटरी इंटरनेट आधारित हो चुका है। तो इंटरनेट को हम एक फॉर्मल एजुकेशन की व्हीकल मानते हुए, मेरा अपेक्षा है इग्नू अपने आप को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड, और ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या, दिस शुड बी द बेंचमार्क। दुनिया के सारे पिछड़े देशों की, इमर्जिंग इकोनॉमी की, कल मैंने एक हिसाब लगा रहा था, हमारी संभावनाएं कहां है। देश की 70-75 देशों के अंदर, जिसमें आबादी दुनिया में 700 करोड़ लोग रहते हैं, और आप अफ्रीका और एशिया दोनों को मिला दें, और एशिया में जापान चाइना को थोड़ा छोड़ दें, चाइना की अपना स्वभाव है, जापान की अपनी कॉस्ट है, ये दोनों को छोड़ दे, भारत ही सबकी दिशा है, भारत ही सबकी दिशा है। आप समझ सकते हो कि आने वाले दिनों में सर्विस इंडस्ट्री में हम कहां पहुंचेंगे। हम दुनिया को अपने जिम्मे में ले सकते हैं। हमारी पढ़ाई सिर्फ हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम नहीं आएगा, दुनिया की स्टैंडर्ड्स को ठीक करने के लिए, दुनिया के लिविंग को ठीक करने के लिए दायित्व हमारे पास है। इसीलिए हमारी वेदों में यह लिखा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, हमने विश्व को अपना परिवार माना है। जिन्होंने इसको कभी हजारों साल पहले देखा था, ऐसे ही नहीं कोई संस्कृति श्लोक नहीं लिखा था। हमारी जिम्मेदारी, हम पीपी किट एक पीस भी नहीं बनाते थे ठीक 2 साल पहले। आज हमने पीपी किट की नेट एक्सपोर्टर बने हैं। हम हमारे देश में 180 करोड़ डोजेस वैक्सीन की लगा चुके हैं। यही हमारी पिछले 2 साल की उपलब्धि है। यह दुनिया हमसे अपेक्षा रखती है।
अभी अभी WHO की प्रमुख आए थे गुजरात में हमारी आयुर्वेद की दुनिया को मान्यता देने के लिए। हमारी आयुर्वेद की अपने आप की प्रसिद्धि है, लेकिन किसी भी कारण से उसकी मान्यता के ऊपर कुछ प्रश्न आता था। आज समय आया है, विशेष करके कोरोना के उपरांत ये आया है कि हमें न्यू मेथड ऑफ प्रोएक्टिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। हमें रिएक्टिव ट्रीटमेंट नहीं, प्रोएक्टिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। प्रिवेंट क्यूरेटिव नहीं, प्रिवेंटिव मेडिसिन की आवश्यकता है। प्रिवेंटिव मेडिसिन की नाम है आयुर्वेद, और आयुर्वेद सब सस्टेनेबिलिटी के साथ जुड़ा है। चाइना में भी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन की दुनिया है, लेकिन ये एनिमल बेस्ड है। हमारी मेडिसिन नेचर बेस्ड है, एग्री बेस्ड है। मित्रों, ये हमारी नॉलेज सिस्टम पे पढ़ा, इसलिए कैनवास कितनी बड़ा है कल्पना करिए। हमारी देश की 14 करोड़ नौजवानों को पढ़ाने के लिए कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं कर पाएगा। हमको डिजिटल वे में, डिजिटल यूनिवर्सिटी जैसी चीजों से आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा दायित्व तो क्या दिया गया है, इस बार 200 टीवी चैनल के लिए 200 टीवी चैनल, हर एक राज्यों को अपने अपने भाषा में टीवी चैनल के लिए 200 करोड़ रुपया की, 200 चैनल के लिए 1000 करोड़ रुपया एलोकेशन किया गया है। यानी एक अलग दूरदर्शन की दुनिया बनेगी शिक्षा के लिए। लेकिन उसमें क्या कंटेंट जाएगा? टेक्नोलॉजी तो बना ही लेगा कोई, कंटेंट क्या जाएगा? कंटेंट शायद हमको इग्नो या NIOS जैसे स्कूल सिस्टम पे, NCERT या इग्नो जैसे या अच्छे यूनिवर्सिटियों की कोर्स कंटेंट को डिजिटल फॉर्म पे अच्छे कम्युनिकेशन स्किल के साथ, ऑडियो विजुअल के साथ बनाने की बड़ी दायित्व है। मैं अपेक्षा रखता हूं इग्नो जैसे इंस्टीट्यूशंस के सामने, ये डिजिटल यूनिवर्सिटी हो या ई लर्निंग की कंटेंट की दुनिया में हो, हम अच्छे स्टैंडर्ड्स की चीज बनाएं, यह हमारी आपसे अपेक्षा है। इन दिनों में एडुटेक बहुत बन चुके हैं। एडुटेक अच्छी इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन एडुटेक की कॉस्ट है। और ये मेरे इग्नो की मेथोडोलॉजी तो एडुटेक है। जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हो, जिस तरीके, अभी किसी ने कहा कि कुछ बिहार ना, कुछ बिहार आप में से कई मित्रों को मालूम ही नहीं होगा। भूटान, बांग्लादेश, बिहार, आसाम, उसी इलाके में चिकन नेक की ऊपर वाला इलाका है कुछ बिहार। और कुछ बिहार में इग्नो की सिस्टम मटेरियल पहुंचा रहा है, तो उससे बड़ा एडुटेक की इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं हो सकता है। कभी कभी हमारी एक दृष्टि बनती है, जो पैकेजिंग अच्छा होता है, जो ब्रांडिंग अच्छा होता है, यही अच्छा होता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप सब अंजनी पुत्र हनुमान हो। आपको मालूम नहीं कि आप कहां क्या कर रहे हो। हमें समाज की जब तक बॉटम ऑफ द पिरामिड को हम उठाएंगे नहीं, उसको नॉलेज के साथ नहीं जोड़ेंगे, उसको एम्पावरमेंट नहीं देंगे, उसको अगर हम अपवर्ड जर्नी पे हैंड होल्ड नहीं करेंगे, उसके साथी नहीं बनेंगे, मित्रों, सोसाइटी में एनर्की आ जाएगी, सोसाइटी खड़ा नहीं होगा। मैं बहुत आशा के साथ आपके साथ इस 2-4 विषय को, गैप एरिया, टेक्नोलॉजी और विदेश में हमारी शिक्षा को पहुंचाना, और उसमें से क्वालिटी को बिना कंप्रोमाइज करते हुए आगे जाना। और मेरे को अच्छा लगा, अभी जैसे आपने कहा कि अभी यहां भी दिख रहा है, इग्नो की दुनिया में सहज, जो आज भी हमारी सोसाइटी में कुछ चैलेंजेस है, लड़कियों को स्कूल एजुकेशन में हम लोगों ने थोड़ा बहुत ले गया है, लेकिन हायर एजुकेशन में शादी हो जाता है। देश के कई इलाका में आज भी बहनों को, माताओं को वो स्कोप नहीं मिलता है। लेकिन सब आजकल टीवी सीरियल देखते हैं, सब सास भी कभी बहू था, ये सीरियल दिखते हैं, सब मूवी दिखते हैं, सब गाना सुनते हैं। ये टेक्नोलॉजी की कमाल है। टेक्नोलॉजी इज न्यू इक्वलाइजर। कास्ट, जियोग्राफी, क्रीड, इकोनॉमिक्स डाटा सभी को छोड़ देता है। आज 20 साल पहले कल्पना करिए, जिनके हाथ में एक मोबाइल फोन होता था, लगता था ये शायद वो 4-5 बड़े बड़े घर से ही होंगे, टाटा बिरला के घर से होंगे, अंबानी के घर से होंगे। आज सुदूर गांव में भी काम करने वाले, खेत में जाने वाली मेरे मां के पास भी एक मोबाइल फोन है। इतना फर्क है, उसके पास 1500 वाला फोन है,
उसकी बेटे के पास स्मार्टफोन आ गया है। मां ने कहा कि मेहनत करके कहा कि मैं लेता हूं छोटा वाला फोन 1,500 वाला, तुम 2,500 वाला 3,000 वाला ले जाओ स्मार्टफोन, उसमें तुम पढ़ाई भी कर लेना, मेरे को बीच बीच में देख भी लेना, जब शहर में जाते हो काम करने के लिए मेरे को बीच बीच में व्हाट्सएप कॉल में देख भी लेना। आज फेसबुक की कस्टमर बेस भारत में कितना है? आज यंगस्टर्स इंस्टाग्राम में क्यों ज्यादा है? आज यूट्यूबर क्यों इतना बन चुके हैं? लोकल फोक सॉन्ग आज हमारी सारे चीज यूट्यूब में मिलता है। ये एक मैं आपको कहानी बताता हूं, एक कोई उसके लिए कोई फॉर्मल एजुकेशन की आवश्यकता नहीं। कोरोना के दिनों में मेरे उड़ीसा में एक छोटी सी गांव में एक ट्राइबल लड़का इसाक मुंडा यूट्यूबर बन गया। पत्थर तोड़ने वाला मजदूर, 8 क्लास के पढ़ा हुआ लड़का, दारिद्र्यता में जीने वाला लड़का, मैंने कहा ना कि कंपल्सन व्यक्ति को इनोवेटर बनाता है। उसके पास एक स्मार्टफोन था, उन्होंने कहीं देखा यूट्यूबर बन सकता है, उसमें से पैसा मिलेगा, उसके अंदर घुसते 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 उन्होंने आज महीने में 1 लाख रुपया की यूट्यूबर बन गया। वो क्या शो करता है? वो एक फिल्म डायरेक्टर है, वो एक एक्टर है, वो एक टेक्नोक्रेट है, वो एक स्क्रिप्ट राइटर है, वो एक मास्टर ब्रांडिंग एडवाइजर है। वो शूटिंग करता है कि आज हम जाएंगे जंगल में कत्थल खाने के लिए। वो जाता है, उसको टीवी में दिखाते जाते हैं, उसको अपने ऐसी सेल्फी लगा के, जो मैं आपको अनुरोध किया जाए ऐसे खड़ा करके कहोगे कि हम इग्नू के थैंक यू कहते इग्नू को। वो इजाक ने एक जंगल में ऐसे किया, कत्थल लिया, कत्थल को लाया, उसको धोया, पत्तल लाया, पत्तल में खाया, बच्चों को बिठाया। ये रियलिटी शो। इसी को बम्बई में बड़ा बड़ा सीन बनाया जाता है, उसको करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है। उसी की इतने फॉलोअर हो गया, 8-9 लाख लोग यूट्यूब में, उसको 1 लाख रुपया महीने में अभी मिलता है। यह टेक्नोलॉजी है। हमें मालूम नहीं है टेक्नोलॉजी कहां से कहां तक पहुंचने वाला है। इसीलिए मित्रों, मैं आज के अवसर पे इस जन जन की यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन में अपेक्षा के साथ आया हूं, विशेष करके। और यहां का टीचर्स को तो अच्छी बात है। जब मैंने कहा कि मैं शुरू में कह दिया कि मैं स्टूडेंट लीडर रहा, और हम लोगों की जब लीडरी करने का एक नशा चढ़ता है, उस समय में हम सबसे, हमारे पहला मैनेजमेंट कौन होता है? वो बेचारा हमारा हॉस्टल की सुपरिटेंडेंट होता है, फिर हमारी जो डीन होते हैं, फिर हम कभी कभी हिम्मत करके VC को भी घराव कर देते हैं। और इग्नू की एक सौभाग्य है, यहां कोई स्टूडेंट नहीं है, इसीलिए आप इतना अच्छा कर पा रहे हो। आराम से मैंने देखा, बहुत अच्छा कैंपस है, 150 एकड़ की कैंपस है, उसको और पेड़ लगाओ इस बार, उसको जंगल करो, लेकिन उसको इतना बढ़िया कंटेंट की यहां एक एपी सेंटर बने। दुनिया की नॉलेज की पॉइंट यही बननी चाहिए हमारे इग्नू। इसी अपेक्षा के साथ मैं आप सभी को बधाई देता हूं, और 21वीं सदी को भारत में एक नया वेब हमको खड़ा करना है। रेनेसांस नॉलेज के यहीं से शुरू होगा। इस आत्मविश्वास के साथ आपको पुनः बधाई, धन्यवाद। भारत माता की जय। Momentous occasion graced by the most befitted personality as our chief guest, and on the top of it, your lively address, sir. It is indeed a memorable experience for all of us. In the beginning, we have promised our students that we'll try to make this experience memorable, and our honorable chief guest, sir, has stamped it. So, thank you, sir. Thank you very much for your gracious presence. Wait for a second. जी. May I now request our honorable chief guest to award a PhD degree which was left out. I kindly request sir to award the degree to Madam Suchi, doctorate in geography. May I request you to please come over to the dais and receive your degree. Sir. अच्छा, one more. Your name
Thank you very much, sir. May I request our respected Vice Chancellor, sir, to felicitate our illuminated chief guest, the very popular Ujjwala man, Honorable Minister of Education and Minister of Skill Development and Entrepreneurship, Shri Dharmendra Pradhan ji, please. Please bring the shawl and memento to present to sir as token of love and respect from us. Vice Chancellor, sir, I now request you to present the very first print of Panchang to our chief guest, please. Professor Malthi Mathur and Dr. Sonia from School of Humanities. Please join. भारतीय ज्ञान परंपरा के वैशिष्ट को बताने वाला तथा काल का वैज्ञानिक एवं दैनंदिन व्यावहारिक रूप पंचांग है। संस्कृत संकाय मानविकी विद्यापीठ ने काल ज्योति नामक पंचांग का प्रथम प्रकाशन किया है। Dr. Tahir Siddiqui, faculty member of School of Performing and Visual Arts, who has painted a portrait of our chief guest, is requested to come up the dais, please. Thank you, sir, for your gracious presence and reminding us, guiding us, and motivating us by reminding our potential and your skill, the strength, so that we can achieve the most out of it. Thank you so much. And in a very subtle manner that you have reminded us by comparing us to Lord Hanumanji, sir, we'll always remember it. Thank you so much, sir. Vice Chancellor, sir, I request you to declare the convocation closed. एक छोटी सी बात और मैं कहना चाहता हूं टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। आप लोग जो अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, हर जगह पर एक स्लिप लगी हुई है। ये स्लिप है ना, आपके वीसी रिपोर्ट हो, मिनट टू मिनट प्रोग्राम हो, ये प्रोफाइल 200 पेज का, ये सारी चीज़ें आपके क्यूआर कोड से विदाउट यूजिंग द पेपर आप सभी निकाल सकते हैं। टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा प्रयोग, और इसको हमारे यहाँ जन का विश्वविद्यालय में जन का जो व्यक्ति है, सिक्योरिटी ऑफिसर जो अभी 1 महीने पहले ज्वाइन किया, उसने किया है। With the permission of the chief guest, Shri Dharmendra Pradhan ji, Honorable Minister of Education and Honorable Minister of Skill Development and Entrepreneurship, I declare the convocation closed at the headquarters. The function will continue at the regional centers as per their program.